मुसाफिर की तरह घूम रहे हैं। माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, papers to be laid on the table. Dr. Jitendra Singh. Dr. Jitendra Singh. आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 1 के आगे मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। Sri V. Muralidharan. Respected Deputy Chairman, sir, on behalf of my colleague Sri Ashwini Kumar Chaubeji, I rise to lay the papers mentioned against his name at serial number 2 in today's revised list of business. Thank you. Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of the business of the Rajya Sabha. Thank you. Professor S.P. Singh Baghel. मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर लिखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। श्रीमती मीनाक्षी लेखी. Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. Sri Rameswar Teli. मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। श्री अजय भट्ट. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज के कार्य की संशोधित सूची के क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। Dr. L. Murugan. Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 8 of today's revised list of the business. Thank you, sir. Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Defence, Lieutenant General Retired Dr. D.P. Vats. Sabhapati ji, with your permission, I rise to lay a copy of the 31st report in Hindi and English version of the Standing Committee on Defence as listed against my name in today's list of business on the subject welfare of war widows and families in armed forces. Thank you. Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Dr. Van V. Roy Kharluki. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the 17th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 17 Lok Sabha, on action taken by government on the observation recommendation contained in its 13th report on COVID-19 pandemic, global response, India contribution and the way forward. Thank you. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, Sri Mithilesh Kumar. श्री मिथिलेश कुमार, प्लीज। मैं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की 16वीं रिपोर्ट अंग्रेजी और हिंदी संस्करण सभा पटल पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि आज की कार्यसूची में मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध है, मैं रखता हूं। स्टेटमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 3 विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा के पटल पर रखता हूं। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री रामेश्वर तेली। महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदान मांगों 2022-23 के संबंध में विभाग संबंधित श्रम, भ्रष्ट और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के तीसरा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों की स्थिति को सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर्स,
I have received 7 notices under Rule 267 from Sri Raghav Chadha, Sri Pramod Tiwari, Sri Akhilesh Prasad Singh, Dr. L. Hanumantaiah, Srimati Priyanka Chaturvedi, Srimati J.B. Mathir Hisham, and Sri Sayyid Nasir Hussain on subjects related to concern over government's attempt to interfere in appointment in higher judiciaries, misuse of CBI, ED and other government agencies situation arising out of farmers' strike and subversion of democratic system and threatening of electoral process. You may recall that Honorable Chairman on 8th December 2022, while considering the notices received under Rule 267, observed that the notice submitted under the said rule has to refer to relevant rule that is required to be suspended. In none of the notices received today, there is any reflection as to which rule is sought to be suspended. Further, these notices are under the consideration of Honorable Chairman. Therefore, I would request Honorable members to kindly cooperate and allow the House to proceed with the listed business. Thank you. Manya Shri Bip, I have made the situation clear. Please. मैं प्रमोद जी आपको बुला रहा हूँ जी. Point of order on these 267 notices which 7 members have submitted, and the chairman has requested last time that any member submitting should refer to the rule being mentioned. Sir, I have 2 points to make for your consideration. Number 1, I have a list here of 3 of the last 267 notices accepted by the Honorable Chairman. 3. The 3 are demonetization on the 16th of November 2016. Last 6 years there's been none. The farmer suicide in April 2015. That's the second last one. And the third last one is attack on secular fabric of our country, 18th of December 2014. Sir, the precedence of these last 3 267 notices is that none of them needed to link it with a rule. None of them. They were 2 points only. They were supposed to say why these 3 are important issues. These 3 were taken. My second point is, since the chairman has been asking, I've also done some study, now I want to share with the House. What is the rule? The common rule for accepting any 267 notice, sir, please kindly look at rule number 29, list of business. The rule clearly states all these members are asking the chairman to do is to apply rule 29, which gives him the prerogative to change this list of business. In other words, drop the 0 hour and bring these subjects to you. So what is the issue, sir? Please clarify and let us know. Thank you. Thank you. हाँ, प्रमोद जी. अपनी बात रखने के लिए सर सबसे पहले 267 पढ़ देता हूँ. हाँ, प्लीज. Can I read, sir? कोई सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकेगा कि मैं कहाँ कह रहा हूँ? हाँ, प्लीज. मेरा तो अनुरोध है सर. हाँ, नहीं, प्लीज, हाँ, बोले. कोई सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकेगा कि उस दिन राज्यसभा के समक्ष सूचीबद्ध कार्य से संबंधित किसी प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलंबित कर दिया जाए, और यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित नियम उस समय के लिए निलंबित कर दिया जाए, परंतु यह और कि उस नियम में लागू नहीं होगा जहां नियमों के किसी विशेष अध्याय के अधीन किसी नियम के निलंबन के पहले ही कोई विशेष उपबद्ध किया जाए, यहां वो लागू नहीं होता. अब जो नोटिस मैंने दिए सर, मैं विषय पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमने प्रार्थना क्या की है सभापति जी को संबोधित. अतः आज सदन के समक्ष, सर ये अगला शब्द महत्वपूर्ण है, आज सदन के समक्ष सूचीबद्ध कार्य निलंबित करके
लोक महत्व के इस प्रकरण पर सदन में चर्चा धन्यवाद करेंगे। प्रमोद जी। तो प्रियंका जी कुछ करें। सर, धन्यवाद। लेट आई एम फिनिशिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईडी सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। नहीं, आप विषय पर ना प्लीज प्रियंका जी। सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। प्रियंका जी अब नथिंग नहीं, यू हैव मेड योर पॉइंट। प्रमोद जी आपने अपनी बात रख ली है। प्रियंका जी आप बोले। Sir, all I'd like to submit, sir, my only humble submission on this issue. Please. Humble submission on this issue is 267 directs us to request the chairman that there is a matter of urgent importance which needs to be brought to the notice and discussed on the floor of the House. Like I've been continuously saying, we are a council of states, sir, we represent our states and there are issues that concern. Now, whether the one quoted by Derek, rule number 29, or whether I look at 37, it is at the discretion of the chairman. There is none of the rules suggest that chairman, we need to quote another rule and under by which this discussion can happen. So new rules, if the new rules are being made, sir, they should be made, every member of parliament should be made aware of it. Because sir, we need to have this discussion. Records are showing that, unstarred questions are showing that. Thank you. And we are not making stories up or cooking up stories like our Honourable Leader of the House said the other day. Thank you. These are proven cases, sir. We need to discuss this, sir. Thank you. Please, no. Honourable Deputy Chairman, the Honourable Member of Parliament who has made this allegation, and I think it's a matter of privilege that she has cast aspersions that somebody is cooking up stories. The fact of the matter is the Honourable Member had in the House alleged a certain number of political actions which was entirely wrong, erroneous and without any basis whatsoever. He has outside the House cast aspersions on me. He has made comments on his social media platform taking recourse to something that another Honourable Member of Parliament had received as a reply which are not related at all. That reply was on total actions. This was about political actions. I would urge you, Chair, to kindly examine the record and hold the relevant members responsible for their erroneous statements. Thank you. Mani, please. No. आपस में बातचीत नहीं प्रियंका जी. No. I am not allowing. प्रमोद जी आपको इजाजत नहीं. Please. आपको बोलने का मैंने मौका दिया. नहीं सही नहीं है. प्रियंका जी आप बैठ जाए. Please. माननीय भूपेंद्र जी आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी. बताएं. माननीय उपसभापति जी, प्लीज सदन की प्रक्रिया में सदस्यों को अधिकार रहता है कि वो अपना नियम रूल बुक्स के अंतर्गत उठाएं, लेकिन जब भी कोई रूल उठाया जाता है उसके बाद चेयरमैन साहब का जो डिसीजन है वो रूल 258 में डिसीजन दिया जाता है और उसका जो सेक्शन 2 लिखा है उसमें लिखा है वो फाइनल है. तो जब सदन में व्याख्या हो गई है कि 267 का जो नोटिस है वो किस तरीके से दिया जाएगा, तो जो नोटिस उस डिसीजन के अभाव में दिए जा रहे हैं उसको न मानकर दिए जा रहे हैं, वो नोटिस अपने आप में ही शून्य है, वो नोटिस ही नहीं है. तो बिना नोटिस दिए, शून्य नोटिस दिए सदन का काम कैसे भंग कर सकते हैं? प्लीज माननीय सदस्यगण, प्लीज डेरिक जी, माननीय सदस्यगण प्लीज. नासिर साहब, प्रमोद जी बोल चुके हैं. नासिर जी प्लीज. माननीय सदस्यगण, माननीय डेरिक जी ने, माननीय प्रमोद जी ने, प्रियंका जी ने अपनी बात 267 पे रखी. मैं एक बार रूल पढ़ करके सिचुएशन क्लियर करना चाहता हूं. एनी मेंबर मे विद द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन. माननीय डेरिक जी आपने जो भी 3 कोट्स बताए कि 3 बार डिस्कशन इन चीजों पर हुई है, तो डेफिनेटली उस वक्त माननीय चेयरमैन का कॉन्सेंट रहा होगा. मैंने क्लियर किया कि इन इश्यूज पर माननीय चेयरमैन का कॉन्सेंट नहीं है, इसलिए इन इश्यूज पे बहस नहीं हो सकती. मैंने ये भी क्लियर किया. माननीय सदस्य, मैं बताना चाहूंगा, माननीय चेयरमैन ने लेटेस्ट अभी 8 दिसंबर को इस रूल के बारे में क्या कहा, एंड यू नो माननीय चेयरमैन ने जो भी लेटेस्ट कहा है दैट विल बी रेलिवेंट फॉर अस. I have clarified what he has told. Again I am repeating. You may recall that Honorable Chairman on 8th December 2022, while considering the notices received under Rule 267, observed that the notice submitted under the said rule has to refer to relevant rules that is required to be suspended. In none of the notices received today by these members, there is any reflection as to which rule is sought to be suspended. Clear.
विप्लव कुमार देव, माननीय विप्लव कुमार, जो 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 सब्जेक्ट क्या है, प्लीज प्लीज जो इशू लिस्टेड है मैं उन पर ही जाऊंगा। प्लीज माननीय विप्लव कुमार देव, इट्स जीरो। और विप्लव कुमार देव अपने विषय पर बोले, आप अपने विषय पर बोले। इट्स जीरो आवर, बिहार के बारे में जीरो आवर, प्लीज बोले। बिहार में श्री संतोष, माननीय सदस्यगण, ये जीरो आवर है, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। जो सब्जेक्ट लिस्टेड है मैं उस पर ही इजाजत दे सकता हूं। प्लीज प्लीज टेक योर सीट, प्लीज। संतोष पी कुमार, मेरे पास जवाब है, अभी गुजरात भी आएगा। यू स्पीक। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबका नाम बुला रहा हूं जीरो आवर के लिए। आप अपनी जगह पे बैठे, हाउस को चलने दें। जीरो आवर बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आप सबको मौका मिला है बोलने का। प्लीज प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स। आप अपने विषय पे बोलेंगे विप्लव जी, प्लीज प्लीज स्पीक, प्लीज स्पीक। नीड टू री ओपन बॉर्डर, हाथ त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर। जीरो है, बिहार का बोलो कि साहब बिहार को पहले पहले बिहार का साहब, बिहार का सुन लीजिए सर, प्लीज सर, पहले बिहार का सुन लीजिए। बहुत बड़े मात्रा में लोग जो इशू लिस्टेड है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। इस डिसऑर्डर में पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहां से? प्लीज प्लीज टेक योर सीट्स। माननीय सदस्यगण, एक प्लीज 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 प्लीज, माननीय सदस्यगण, प्लीज 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 प्लीज। आप जानते हैं जो चीजें लिस्टेड है बहस उन पर ही हो सकती है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है अपनी अपनी जगह बैठे। ये जीरो और महत्वपूर्ण विषय है, इनको इनमें सबको मौका मिला, आप चलने दीजिए। अगेन श्री विप्लव कुमार देव, प्लीज यू स्पीक ऑन योर सब्जेक्ट। सर मैं स्पीक ऑन योर सब्जेक्ट, मैं उठाऊंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ बिहार के बारे में एक बार राज्यसभा की कार्यसूची में जो चीजें लिस्टेड है उस पर ही बहस हो सकती है। प्लीज प्लीज 15 मिनट के लिए सदन स्थगित, 15 मिनट के लिए सदन स्थगित।
में कोई खर्चा भी नहीं आएगा, उसको ऑपरेशनल बनाया जाए या डिजिग्नेट किया जाए। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, 0 hour, please, please, 0 hour, 0 hour, please. माननीय विप्लव देव जी, आपको जिस विषय पर स्पेशल प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज। विप्लव कुमार देव, नीड टू बी ओपन बॉर्डर हार्ट ऑन त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर, प्लीज। बिहार के बारे में एक बार माननीय संतोष कुमार पी, प्लीज। योर सब्जेक्ट इज नीड टू reinstate concessions to senior citizens in railway. Please speak on the subject. There is a need to reinstate. Please अपनी सीट पे बैठे। 0 hour चलने दे, सदस्यों का विषय है, प्लीज। प्लीज मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, बैठ जाए प्लीज। प्लीज 0 hour चलने दीजिए, प्लीज।
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, जीरो आवर श्री विप्लव कुमार देव। जीरो आवर is your right, honorable members. Let him raise. महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, बिहार में 40 लोगों को इस तरह का शराबबंद स्टेट में मार दी गई है, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए और विषय को जनताओं के सामने आने चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, बिहार में 40 लोगों की मौत हो गई और इसके लेके हाउस को चर्चा करनी चाहिए, विषय आनी चाहिए। शराबबंद स्टेट कैसे हो गया? सब्जेक्ट इज डिफरेंट। माननीय उपसभापति महोदय, आपका सब्जेक्ट है नीड टू रीओपन 100 ऑन त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर। योर सब्जेक्ट इज डिफरेंट। विषय है गरीब लोग कैसे नहीं हुई है, शराबबंद सब्जेक्ट कैसे हो गया, उसके बारे में आप अनुमति दें। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा विषय जरूर मैं उठाऊंगा, किंतु इससे पहले ये संवेदनशील जो विषय है, बिहार में 40 लोगों का मौत हो गई है, इसके बारे में एक बार आप हाउस में उठाने के लिए, चर्चा करने के लिए मौका दीजिए, उसके बाद मेरा अपना विषय में रख लूंगा। उसका एक प्रोसीड्यूर है, आपने नोटिस नहीं दिया है, तो आप प्रोसीड्यूर में आइए। अभी फिलहाल आपका जो इशू है, शराबबंदी स्टेट में 40 लोग शराब से मृत्यु होती है, जहरीली शराब से, और इस सरकार की अधिकार नहीं है, इस तरीके से गरीब लोगों का जान चली गई। Have you finished? Are you going to raise your issue? आप अगर नहीं उठाते, मैं दूसरा है, मैं बुलाता हूँ। Very important subject. So I will call this need to reinstate concession to senior citizens in railway. Shri Sandosh Kumar P. Sandosh Kumar P. There is an urgent and critical need to reinstate the concession given to the senior citizens in Indian Railways. Judicial to 138 million senior citizens. No point of order here. No point of order. No point of order in Chihuahua. Please. आप बैठ जाए, आप लोग भी बैठ जाए। Honorable member is raising his Chihuahua mention. He's not allowed. So, please sit down. Please sit down. Please sit down. And this is a very important issue that has been raised by Mr. Sandosh Kumar P. Sir, with your permission, I wish to say that in this house, state issues the law and order. Please, Mr. Jha, please don't disturb. He is raising an issue. You allowed him. There is an urgent and very critical need to reinstate the concession given to the senior citizens in Indian Railways. It will be beneficial to 138 million senior citizens of this country. Honorable member, this is a very important issue concerning senior citizens. Please be seated and let's speak. Withdrawing concessions given to He used the mic. that was with the help of related restrictions. COVID-related, I mean the pandemic-related restrictions are over. We need to restore the concession
as you all know, honorable members, please remain silent. Let him raise his issue. As far as we can discuss later. Let him raise. This is an important issue. Please go to your seat. Please go to your seat. Please go to your seat. Honorable members, please take your seats. Please take your seat. Please take your seat, honorable member. Go to your seat. Please go to your seat. Please. Because of the misrule of the government, people have died, and I would like to Thank you, Mr. Santosh Kumar. The next issue is need to highlight startup revolution in generating employment for the youth of the country. Srimati Sangeeta Yadav. Sangeeta Yadav, are you raising the issue? Sangeeta Yadav, are you raising your issue? Please go to your seat. Please go to your seat. You speak when your name is called. When your name is called. Please go to your seat. You can speak from your seat only. You cannot. No, this is not done. Go to your seat. Everyone is in their seat. Why you are in oil? Why you are in oil? Go to your seat. Whatever you want to speak, you can speak from your seat. No, please go to your seat. I am not going to listen to you until and unless you go to your seat and speak properly. Please, honorable members. The House stands adjourned till noon.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 91, माननीय राजीव शुक्ल। धन्यवाद उपसभापति जी। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय राजीव सर, अपने सवाल में माइक तो चालू करो भाई। ये अपने इस पे बोल दो। जवाब में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सब तो छुट्टियां जो है, ये सब तो तय करने का अधिकार कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट अपनी छुट्टी तय कर लेती, हाई कोर्ट अपनी तय कर लेती, चीफ जस्टिस चाहे जितनी छुट्टी बढ़ा दे घटा दे, सरकार का कुल मिला के जवाब है। इस समय जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है 4 करोड़ 90 लाख कंट्री में, लिटिगेंट्स भटक रहे हैं, परेशान हैं, और जो है डिस्पोजल उनका नहीं हो रहा। आखिर किसको रिस्पॉन्सिबल करें? जुडिशरी कहती है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं करती, तमाम वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए जो एनजीएससी का पुराना प्रपोजल था, कि जिसमें सब लोगों के साथ मिलजुल के जजेस का सिलेक्शन हो। ये झगड़ा भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने भी इस इशू को उठाया था। तो मैं वही सरकार, उन्होंने अभी जो रिटायर्ड जो जजेज हैं उनको भी तमाम बेनिफिट अनाउंस किए हैं। तो ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं इनको ख़त्म करने के लिए जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर्ड वो कहते हैं कि इट हैज़ बिकम ए ओपेक सिस्टम, इट हैज़ नॉट ऑफ नो यूज। तो आई वांट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर what roadmap, what plan has he got in future to resolve this crisis? Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सदस्य राजीव जी ने सवाल पूछा है, एक तो गंभीर सवाल है और सदन को और पूरे देश को भी चिंता करने का आवश्यकता है। मुझे भी ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारा देश में इस वक्त टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं। और जब देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव आम लोगों में कितना होता होगा। ये इसका कई कारण है। जो मूल कारण एक माननीय सदस्य जी ने जो जिक्र किया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और जो जजेस का संख्या जो स्ट्रेंथ जितना सैंक्शन हुआ उसमें से जो पेंडेंसी है, यानी कि वैकेंसी इस वक्त जो देश भर में है। 2015 में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पारित किया था, और साथ साथ में 2/3 राज्यों ने भी इसको सहमति देकर के यहां पारित हुआ था। ये एक हमारा देश संविधान से चलती है और देश का सॉवरेनिटी लोगों के पास है। लोगों के भावना से देश चलता है और संविधान के मुताबिक चलता है। मैं सीधा राजीव जी ने सवाल किया उसको अपने बात को जोड़ के ये बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पूरी ताकत, पूरी योजना के तहत हम पेंडेंसी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो कदम जितने उठाए हैं उसको मैं बहुत लंबा उसका जवाब हो जाएगा, तो उसको मैं अभी जिक्र नहीं करते हुए ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए, और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों का नाम भेजे ताकि वो क्वालिटी हो, और हमारा देश का जो विविधता है उसको देखते हुए सब जाति, सब धर्म, महिलाओं को खास करके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सदन का जो भावना है, देश की जनताओं का भावना है, उसके मुताबिक हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा कोर्ट के बारे में टिप्पणी में इसलिए नहीं करना चाहता हूँ
क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो अधिकार कोर्ट को दिए हैं उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन आप संविधान का प्रावधान देखेंगे तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो सरकार का ही अधिकार था और कोर्ट के साथ हमारा कंसल्टेशन चलता था। 93 का बाद वो चेंज हो गया। तो मैं राजीव जी को इतना बताना चाहता हूं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को खत्म करने के लिए हम जरूर अपना तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर के जब तक हम नए व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे तब तक जजेस का वैकेंसी का इशू, अपॉइंटमेंट का सवाल उठते रहेगा। और मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बात सही है कि देश के भावना या इस सदन का भावना जो रखा गया था उसका मुताबिक आज हमारा पास व्यवस्था नहीं बनी है। दूसरे सर, जो आपने रिटायरल बेनिफिट्स, क्योंकि सर मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूं कि महत्वपूर्ण है। हमारे सरकार जजों के बारे में, उनका वेलफेयर, उनका वेलबींग के लिए हम सोचते हैं। अभी अभी सरकार ने निर्णय किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब रिटायर होंगे उसके लिए कुछ बेनिफिट्स, उसके लिए जो बेनिफिट्स हैं हमने एक्सटेंड किए हैं। मैं देखिए ये आज यहाँ मंत्री बैठे हैं, मंत्री आप लोग भी मंत्री थे, मंत्री रिटायर होने के बाद, हारने के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं सिवाय जो पेंशन पार्लियामेंट से जो मिलता है। लेकिन जजों का पेंशन के अलावा हमने जो अभी एक्सटेंड किए हैं बेनिफिट्स, चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उसको एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, एक शॉफर मिलेगा इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो इक्विवेलेंट टू ब्रांच ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ जस्टिस के लिए प्रावधान किया है। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हमने जो उनको बेनिफिट दिए हैं, एक डोमेस्टिक हेल्प, एक शोफर, और साथ साथ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस सेंसिटिव मैटर डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद 6 महीने के लिए उसको टाइप 7 का एक एकोमोडेशन और राउंड द क्लॉक 5 साल तक उसको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को 3 साल तक के लिए राउंड द क्लॉक उनको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। थैंक यू, थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री मानिए राजीव। जवाब दिया है उसमें उन्होंने मतलब एक तरह से बहुत असहाय महसूस किया है कि सब कुछ जो है कॉलेजियम ने अपने पास रख लिया, जजेस के अपॉइंटमेंट को सरकार का कहीं को रोल लेगी। मुझे याद है कि जब हमारी भी सरकार थी और इसके बाद जब ये मोदी जी की सरकार आई तो हम लोगों ने NGSE पास किया था और यूनानिमसली पास किया था, पूरे सदन ने पास किया था। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप उसको रिवाइव कर रहे हैं? इट्स अ वेरी स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। आर यू प्लानिंग टू रिवाइव दैट बिल टू क्रिएट NGSE ताकि सो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व? सेकेंडली, ये जो आप कह रहे हैं सारी सुविधाएं रिटायर्ड जजेस को दी, तो उनके साथ कुछ काम भी ले रहे हैं ताकि पेंडेंसी कम हो कि सिर्फ सुविधाएं देते चले जा रहे हैं? ड्राइवर, कार, स्टाफ, कुक। हो गया, थैंक यू सर। राजीव जी ने फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। जहां तक NGSE का सवाल है, मैंने पहले ही बता दिया कि देश का सोच, सदन का सोच सबने देख लिया और सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो स्ट्राइक डाउन किया, उसके बाद मैं आज इस सदन को बताना चाहता हूं, कई रिटायर्ड जजेस और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सदस्य ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि उस समय का जो निर्णय हुआ और पार्लियामेंट का यूनानिमसली पास किया वाला एक्ट को खारिज करना, ये सही नहीं था। ये उस पीठ में जो थे उन्होंने भी इस बात को कही है और कई जजों ने, सिटिंग जजेस और रिटायर्ड जजेस ने भी कहा है, और देश के कई जाने माने जूरिस्ट, लॉयर्स, एडवोकेट्स और कई हमारे राजनीतिक दल के सदस्यों ने भी इस बात को कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस देश के सोच के साथ आया वाला एक निर्णय को जो स्ट्राइक डाउन किया है वो सही नहीं किया है। मेरे पास मुद्दा आया
और मैं इस सदन को जानकारी देना मेरा दायित्व भी है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं। Thank you. Please, no. Mr. Tiruchi Siva, no, none. You have asked your. आपने पूछ लिया सवाल. माननीय तिरुचि शिवा जी, नहीं, please, माननीय तिरुचि शिवा जी. Thank you, Deputy Chairman, sir. Mike. Thank you, Deputy Mike Chairman. is on, please. Sir, since there is no reservation policy is in place in the appointment of judges, there is a strong feeling that the SC, ST, OBC and women category are not getting the due representation in the appointment of judges. I would like to know the breakup details of the number of judges in SC, ST and women and OBC quota in High Court and Supreme Court, and would the minister consider of changing the nomenclature of Madras High Court as Tamil Nadu High Court? Thank you. सर, सबको पता है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी कुछ प्रथा ऐसा है जिसको हम मानते हैं। जैसे कैबिनेट फॉर्मेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सब जाति, सब धर्म और सब इलाका का ध्यान में रखते हुए कैबिनेट फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से जुडिशरी को लेकर के जो आखिरी पत्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लोगों को जो लिखा है, उसमें हमने ये आग्रह किया कि जब आप नाम भेजेंगे, ऐसे नामों को आप ध्यान में रखा जाए जो वंचित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब एक ही जज हुए हैं, जस्टिस सेमा जो नागालैंड से आते हैं। आज तक एक सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग एकमात्र रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और आज हमारे पास 4 शेड्यूल कास्ट के जज हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कितने जाति से कैसे लेना चाहिए, मैं इसका नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं इसको जवाब दे रहा हूं। तो रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी हमने आग्रह किया है कि कोशिश करे कॉलेजियम कि सब जाति को किसी न किसी रूप से जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। थैंक यू। माननीय सुशील मोदी जी, माननीय सुशील मोदी। उपसभापति महोदय, प्लीज, माननीय मंत्री ने ये हॉलीडेज के बारे में उत्तर दिया है। उपसभापति, माननीय मंत्री जी ने बताया कि हाई कोर्ट के अंदर 155 हॉलीडेज होती है एक साल के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में 141, और इतनी बड़ी संख्या में केसेस पेंडिंग है, और पूरे हिंदुस्तान में किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में वोकेशन का प्रावधान नहीं है, केवल स्कूल कॉलेज छोड़कर। संक्षिप्त सवाल। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेंगे कि समर वोकेशन, विंटर वोकेशन को खत्म करके, और जैसे हर व्यक्ति अपनी छुट्टी लेता साल में 120 या 115, वो व्यवस्था जो अन्य जगह पर लागू है, उसको करने के बारे में क्या चीफ जस्टिस से बात करेंगे? धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। माननीय सुशील मोदी जी का जो अनुपूरक प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की छुट्टियों को लेकर के क्या माननीय मंत्री जी मुख्य न्यायाधीश से बात करेंगे, इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि अदालतों का जो कार्य दिवस है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के अभ्यास और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाता है, जिससे उसकी बैठकें और अवकाश आदि सब उसी में शामिल हैं। इसी प्रकार से हाई कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी बैठकों और छुट्टियों सहित अपने अभ्यास और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाते हैं। अदालतों की छुट्टी कम करने या समाप्त करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि मामला न्यायपालिका के क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन जैसा पेंडेंसी पर हमेशा चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में लगभग 5 करोड़ के आसपास होने जा रही हैं, तो इस बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो समर वेकेशन है ये 7 सप्ताह की है, माने 49 दिन। तो पिछले 4 साल से मैं देख रहा था छुट्टियां जो हैं 1 साल पूरे 49 दिन हुई और 3 साल 48 दिन हुई हैं। इसके बाद विंटर वेकेशन भी है, होली भी 5-6 दिन की है, दिवाली भी 5-6 दिन की है, और गस्टेड हॉलीडे हैं। सैटरडे संडे को माननीय सुप्रीम कोर्ट का कार्य दिवस नहीं होता है, तो इस प्रकार की बात की जा सकती है। और हम सबका, सरकार का और अदालत का, सबकी मंशा यही है कि पेंडेंसी कम हो और त्वरित न्याय लोगों को मिल सके। धन्यवाद। माननीय विवेक तनखा। सर, मेरा प्रश्न ये है कि
हम देख रहे हैं कि पेंडेंसी की प्रॉब्लम है, जजेस की अपॉइंटमेंट की भी प्रॉब्लम है, और इसके लिए तो एक लार्जर डिबेट किसी दिन आई एम श्योर पार्लियामेंट में होगा. But the question that is before you, Honorable Law Minister, is that whether vacations should be permitted or not in the courts. मेरा इसमें एक सुझाव है, is something which the judiciary might accept also. You should have continuing courts. Court should never close. But you can give holidays to judges, and which can be spread across the year in terms of their own convenience. Instead of closing the court, give them that. माननीय विवेक तनखा जी, आपका सुझाव है ये, सवाल आप पूछें. तो सवाल ये है कि can the government come forward with such a suggestion to the government? Thank you. With the court. Thank you. Sir, Honorable Member Vivek Tankaji himself is a very senior lawyer. He understands how judiciary functions and how much government can intervene. However, his suggestion is well taken. And definitely there is a feeling amongst the people of India that the long vacation which the courts obtain is not very convenient for the justice seekers. Definitely, as a law minister, it is also my bounded obligation and duty to convey the message of this house or the sense of this house to the judiciary. Will definitely ensure that even if there are vacations, the functioning of the court should not be stopped. Although there is a vacation bench, but that bench is very, very limited one. So that is why I feel that the court can think about giving a space which will lead to functioning of the court in a limited manner during the vacation period also. Thank you. Now question number 92, Honorable P. Wilson. Sir, thank you, Deputy Chairman, sir. Please. Mani Mantri ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. I have the privilege to raise my question in presence of Honorable Prime Minister. Thank you, sir. First supplementary. First supplementary question. Sir, please tell this August House whether the ministry has taken any steps to prevent cyber attacks from taking place in Kalpakkam Nuclear Power Plant, Kudangulam Nuclear Power Station, and other nuclear power plants, as cyber attacks have been reported to be taken place in the past in the nuclear power plants. Thank you. Deputy Chairman, sir, I appreciate the Honourable Member Shri Wilson's interest in the subject and his concern for his home state of Tamil Nadu and the atomic plants that we have over there. Certainly, there was one such report last year, following which we have put in place a mechanism whereby different levels of screening is done, monitoring is done, and I can assure through you, the August House as well, that the nuclear plants are well protected from all kinds of intrusions, including the cyber attacks. And Tamil Nadu, being one of the important hubs of India's premier nuclear plants, is always a matter of great priority for all of us. Thank you. Second supplementary, Mr. Wilson. Chairman, sir. Sir, please inform this August House what safety measures have been taken by the ministry to reduce the possibility of radiation releasing nuclear accidents, the problems of radioactive water disposal, including safe stocking of spent fuel, and the possibility of contributing to nuclear weapon proliferation. Thank you, sir. Deputy Chairman, sir, this concern has been raised from time to time at different forums, including in this House. But so far we have not come across any such incident where on account of radioactivity some damage, any kind of damage might have accrued. And I would rather solicit the support of the honourable members and also the honourable member Mr. Wilson that some of our plants get delayed and stalled because of certain apprehensions in the public, wherein the need is to create some kind of awareness. We have, in fact, in the context of Tamil Nadu itself, we have the Indian Neutrino Institute coming up in district Theni in Tamil Nadu. There also it has got delayed because of certain anticipations and certain protests. But so far we have never had, our plants are very well protected, we have different shields, and the waste material also is disposed of in a particular mechanism following certain SOPs. It is first placed near the reactor for a few months, then
away from the reactor, which is known as away from reactor storage, for about 5 years, nearly 30 meters deep into the surface of the earth, and then also reutilized, and never once has there been. In addition, not only from radiation, even from tsunamic incidents, our plants are very well protected. Our western plants, the nearest tsunamic zone is Karachi. For the southern plants, including Tamil Nadu, the nearest is Indonesia. So we have protected from all kinds of such collateral damages. Thank you. Honorable M. Thambi Durai. Thank you, Mr. Sir, I want to know from the Honorable Minister, he has already said there are so many research centers are going to be established to spell out the agony of the people and also concern of the people. He has said that certain incubation centers established only in atomic Please question, sir. So I want to know from Yes. the Honorable Minister whether we will come set up this kind of research centers in IITs like also institutions which can contribute for the spelling out this kind of. Thank you. Thank you, Deputy Chairman, sir. This gives me an opportunity to share with this august House that it was at the behest of Honorable Prime Minister that in 2016, a unique initiative was taken in the form of Atal Innovation Mission. And thereby, a series of Atal Innovation Centers have been set up across the country, not only in IITs, but also in other institutions. Now, coming directly in the context of the question that we have today related to the Department of Atomic Energy, here itself we have 5 such incubation centers, which one of which is, of course, in Mumbai, the BARC, in the premises of the Bhabha Atomic Research Center, and the projection is that it will turn out over 75 startups in the next 5 years. We have the Raja Ramanna Center, again in Indore, where we have set up one of these incubation centers. So we have 5, where we are planning to turn out 22 startups in next 5 years, with 3 trade transfer agreements. Institute of Plasma Research in Gandhinagar, Gujarat, with 32 startups projected. Variable Energy Cyclotron in Kolkata, with 37 startups and 7 transfer agreements. And Indira Gandhi Center for Atomic Energy in Kalpakam, Tamil Nadu. So, and as far as the BARC Center is concerned, already certain allocations have already been done. So we are in the process of setting up, because this is a unique concept, this Atal Innovation Center. They'll function as interface between research and the commercial applications, which was the Honorable Prime Minister's vision to create a synergy between research, academia and industry in order to provide avenues of livelihood, avenues of entrepreneurship, avenues of startups. Thank you. माननीय जुगल सिंह लोखंडवाला. सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि 3 चरणों के न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम कहाँ तक पहुँचे हैं और एवं थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र कब तक शुरू होंगे? अगर सुरक्षा की बात होगी, नहीं जवाब देंगे तो कोई बात नहीं. धन्यवाद. सभापति महोदय, ये सत्य है कि भारत में थोरियम के सर्वाधिक रिजर्व मौजूद हैं विश्व भर में, और इसका अगर पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाए तो वी आर अ स्टोर हाउस ऑफ थोरियम. और इसका सर्वप्रथम प्रयोग भी यहाँ पर ही हो रहा है. कामनी नाम का हमारा एक रिएक्टर चल रहा है, प्योरली इंडिजिनस, पूरी तरह से आत्मनिर्भर, और यूरेनियम 333 का उपयोग करता है, जो थोरियम से ही पैदा किया जाता है. तो उस दिशा में पहले से ही प्रयास जारी है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम बाकी देशों की तुलना में इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं. धन्यवाद. माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी. My question to Honorable Minister through you would be, in the last winter session, the Minister had stated the construction of the first prototype fast breeder reactor would be completed by October 2022. What is the status of the FBR at Kalpakam Nuclear Complex in Tamil Nadu? Thank you. Thank you. I'm glad, Deputy Chairman, sir, the Honourable Member has followed up this issue. Kalpakam is one of the oldest. We have 4 units, and it's totally indigenous, and the reactor that you are mentioning is nearly complete. So I think we are making a headway. In fact, that also, if I, with the permission of the chair, I might add over here, that it is only in the last about 8.5 years, many of the units have been made functional. For example, one of the premier installations was Kundakulam,
and it started way back in 2002. But it was only after 2014, after 12 years, that the first unit was made functional in December 2014, followed by in the next year the second unit, and the work has started on third and the fourth unit. And we plan to go up to 6 units by next 5 years or so. So most of this functional activity has happened in the last 8.5 years, and the integrated project that you refer to is almost complete. Thank you. Now question number 93, Honorable R. Girirajan. Yes, please. Manya Mantri. Put your first supplementary. Thank you, Deputy Chairman, sir. Air pollution of severe nature is a root cause for the death of 6 lakh children worldwide. The dangerous pollutants like ozone, particulate matter, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide and lead cause several problems for children's health. Prenatal exposure to polluted air causes neurodevelopmental disorders in children. Exposure to polyclinic aromatic hydrocarbons. Please be brief in your question, please. Exposure. Polyclinic atomic hydrocarbons was associated with the symptoms of anxiety and depression and reduced IQ among the children. My question to Honorable Minister is whether the Union Government has taken any protective measures to control air pollution of different nature of ensure children's health in India. Thank you. And if so, the details Thank you, Mr. Girirajan. You have put your question, please. माननीय उपसभापति महोदय, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 131 शहरों का चुनाव किया गया है। जहां तक उसके कार्यक्रमों का संबंध है, एयर क्वालिटी को बनाए रखने के लिए नगरों में जो कचरा जलाने का है, उसके ऊपर एक अच्छी तरीके से प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना, सरकार के द्वारा जो संसाधन है, विशेष रूप से उस प्रकार के ऊर्जा के संसाधन जैसे सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी को ज़्यादा प्रोत्साहित करना, एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रोत्साहित करना, एयर क्वालिटी को रखने के लिए विशेष रूप से दिल्ली में हम लोगों ने BS4 से BS6 के जो फ्यूल स्टैंडर्ड्स को हमने तय किया है। धूल के जो कण होते हैं उसके लिए हमने गाइडलाइन निकाली है। जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें धूल के कणों को किस प्रकार से नियंत्रित करा जाए उसकी गाइडलाइन निकाली गई है। और इन सब नियंत्रणों के अंतर्गत अगर ये देखा जाए कि 2022 में जो 131 जो नेशनल क्लीन एयर मिशन का जो प्रोग्राम चला है, उसमें लगभग देश के 95 शहरों में पिछले 4 वर्षों से अगर देखेंगे तो जो PM10 जो पार्टिकुलेट होता है उसमें काफ़ी कमी आई है। हमने शहरों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कि कौन शहर ज़्यादा अच्छा एयर क्वालिटी को रख सकते हैं, उसके लिए पुरस्कार देने का भी विषय किया है। और इस वर्ष 9 शहर विशेष रूप से लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अमरावती, मध्य प्रदेश में देवास, उड़ीसा में सुंदरनगर और हिमाचल में नालागढ़ को एक इस प्रतियोगिता के तहत पुरस्कृत भी किया गया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और सेकंड सप्लीमेंट्री मिस्टर गिरिराजन। Sir, I would like to know from the Honorable Minister the funds allocated for the National Clean Air Program, NCAP, and the National Green Mission and other programs under the umbrella of the National Action Plan on Climate Change since 2019, state-wise, and why just 2 cities, Trichy and Toothukudi alone included from Tamil Nadu under NCAP, and why other cities, corporations in Tamil Nadu are neglected under NCAP? Thank you. On priority basis, Chennai should be included. Thank you. First, because please be brief. Please be brief in your question. Chennai should be included in priority. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 131 शहरों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चुना गया है और 2017 की तुलना में मैंने बताया 2024 तक इन शहरों की जो वायु गुणवत्ता है उसमें 25 से 30% कमी लाने के लक्ष्य को किया गया है। इन 131 शहरों को चुनने का जो कारण है वो उनके वायु प्रदूषण में जो एक तरीके से ज़्यादा उनका वायु प्रदूषण खराब है इसलिए चुना गया। चेन्नई का वायु प्रदूषण अच्छा है और अच्छा ही रहना चाहिए, उसके लिए आप भी प्रयास करें। थैंक यू। माननीय श्री नरेश बंसल जी। नरेश बंसल जी। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो कदम डिकार्बनाइजिंग के लिए उठाए हैं उससे एयर पोल्यूशन के कारण बीमार होने वाले बच्चों के और उनकी मौतों में
कुछ कमी आई है क्या? आई है तो उसका डाटा क्या है? धन्यवाद। राज्य सरकारों में लगातार मॉनिटरिंग किया जाता है, ये डाटा मेरे पास उपलब्ध है। धन्यवाद। ऑनरेबल जोस के मनी जी, प्लीज बी ब्रीफ इन योर क्वेश्चन। Sir, the data provided by the ministry to my question on February 9th states that for the combined expenditure for environment protection for the last 5 years is 3,102.38 crores, out of which a meager amount of 41.13 crores were spent on pollution abatement. So my question is, when the country around the world are focusing on attention of bluer, cleaner and cleaner future, whether the government has drawn out a clear action plan to reduce environmental pollution and to achieve a clean and sustainable India. Thank you. माननीय मंत्री जी। भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को चलाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 131 शहरों को 6,897 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में वायु सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और जो मैंने अपने पूर्व उत्तर में जो कार्य रेखांकित किए थे, उन सब कार्यों को इन शहरों में इस कार्यक्रम के तहत संचालित किया है। धन्यवाद। माननीय मुकुल वासनिक जी। उपसभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये हकीकत है कि इस वर्ष सन 2022 में दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सिर्फ एक ही दिन ऐसा रहा जिसको गुड की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। दिल्ली में, भारत की राजधानी में हर साल पिछले कुछ सालों से स्कूलों को ठंड के दिनों में प्रदूषण की वजह से बंद करना पड़ता है। क्या दिल्ली के लिए कोई विशेष योजना केंद्र सरकार ने बनाई जिसके वजह से ये स्थिति से हम निपट सके? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं उनको बताना भी चाहूँगा कि सरकार के प्रयासों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में जो पराली जलाने का जो विषय होता था उसमें 32% की कमी आई है। पिछले वर्ष 2021 में 78,550 इंसिडेंट हुए थे, उसके मुकाबले इस वर्ष 53,900 इंसिडेंट हुए हैं। उसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारत सरकार के उस कानून को जाता है जिसके अंतर्गत हमने नेशनल ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग अथॉरिटी का निर्माण किया है, क्योंकि दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के कारण है। इसको एनसीआर भी नहीं मानना चाहिए बल्कि एयरशेड की पहचान को हमने एक तरीके से कानूनी स्वीकृति दी थी। इस एयरशेड के अंतर्गत हमने पराली जलाने का जो विषय है उसमें किसानों को काफ़ी हद तक साथ लेने का काम किया और हरियाणा सरकार तो विशेष रूप से बधाई की पात्र है कि हरियाणा में 40% से ज़्यादा पराली के जलाने में कमी हुई है। दिल्ली का जहां तक केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का विषय है, दिल्ली में प्रदूषण सबसे पहला वाहनों के कारण होता था। 2014 में जब से हमारी सरकार आई है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे उसको पूरा करने का सरकार ने काम किया है। तो जो अब बाहर से जो कमर्शियल व्हीकल आते थे वो दिल्ली के बाहर से जाने लगे हैं। दूसरा जो व्हीकल पोल्यूशन होता था उसको हम BS4 से BS6 में लेके गए हैं। तीसरा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता था दिल्ली में हमने 100% PNG कर दिया है और NCR के जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं उधर भी अब हमने लगभग 30 से 40% PNG के विषय को आगे बढ़ाया है। दिल्ली के आसपास जो हमारे ईंट भट्टे के जो लोग थे उन्होंने भी हमारा अच्छा सहयोग किया और ईंट भट्टों को हम जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर के गए हैं। दिल्ली में पूरी तरीके से जो डीजल के जो जनरेटर थे उसके प्रयोग पे हमने पाबंदी लगाई। इससे पहले ही जब हमने पिछले साल मॉनिटरिंग करी थी तो गुड़गांव में लगभग 73 सोसाइटी डीजल पे आश्रित थी।
जिसको हम रिड्यूस करके 3 लेकर के आ गए हैं। वाहनों द्वारा प्रदूषण की निगरानी के लिए भी जहां हम इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां प्रदूषण नियंत्रण का भी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो निर्माण कार्यों में प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए भी डस्ट मैनेजमेंट के लिए हम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण में हमने एक और जो चीज़ देखी है कि खुले में जो कचरा जलाना है, तो खुले में कचरा जलाने को हम पूरी तरीके से रोक रहे हैं। और दिल्ली के पॉल्यूशन में जो वासनिक जी कह रहे थे, इस बार केवल एक ही दिन ऐसा रहा है, बाकी औसत हमारा बहुत अच्छा रहा है। और हम लोगों ने इस अपने कमीशन के द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली हमने लागू किया है। और ये इतना सिस्टमेटिक होने लगा है कि जैसे ही AQI का स्तर जब ज़्यादा खराब पे जाता है, तो ऑटोमेटिक वो प्लान अपने एक्शन में आ जाता है। और मेरे को लगता है कि NCR के जो हमारे आसपास के भी राज्य हैं, वो इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा बनाए गए इस प्रगतिशील कानून का असर आज हम दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण। धन्यवाद माननीय मंत्री, धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 माननीय जवाहर सरकार जी। माननीय मंत्री जी। Sir, the statement is laid on the table. First supplementary. Sir, the first question I would like to ask is, public service broadcasting is now being mandated on all TV channels of India. Public service broadcasting, that was the mandate of Prasar Bharati. Now, has Prasar Bharati failed? Number one. And a sub-question to this is, why is mandate, why is monitoring, why is punishment being issued for a good cause like public service broadcasting? Thank you. धन्यवाद सर। दो इश्यूज इस पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उत्तर में। एक की जो नई गाइडलाइंस भारत सरकार ने बनाई है अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की, पहले दो अलग अलग थी, अब इसको एक ही गाइडलाइन बनाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ कंप्लायंस, इस पे भारत सरकार ने पूरा जोर रखा है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, पहले परमिशंस लेनी पड़ती थी किसी भी लाइव टेलीकास्ट को करने के लिए, अब प्री रजिस्ट्रेशन ही केवल करवानी पड़ती है, आपको जानकारी ही देनी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए इसलिए भी नई गाइडलाइंस को लाया गया है। और स्पेसिफिक टाइमलाइंस के अंतर्गत सर हमने परमिशंस अब देनी शुरू कर दी है, बहुत कम समय में उसको करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है कि आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहाँ पे सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। पहले केवल कंपनीज को परमिशन मिलती थी, अब LLPs को भी तय कर दी है। और पहले एक साल के बाद आपको रिन्यूअल के लिए आना पड़ता था, 5 साल की हमने समय सीमा कर दी ताकि आसानी हो सर। क्योंकि माननीय सदस्य खुद प्रसार भारती के पहले CEO रहे, और ये कहना कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर फेल हो गया, इनके मुंह से कम ये शोभा नहीं देता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आखिरकार सरकार ने हर प्रयास किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ कंप्लायंस, दोनों में बहुत सारे सुधार है, बहुत लंबी लिस्ट है। ये ऑक्शन नहीं हम करते एयरवेव्स, हम इसको एलोकेशन करते हैं ताकि जन जन तक टीवी चैनल्स भी अपनी खबर या बाकी सबको पहुंचा सके। बदले में सर अगर सरकार ने इतना कहा कि आप 30 मिनट के लिए जनहित और राष्ट्रहित के मुद्दों को बताइए, तो मुझे लगता है ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी सारे ही अधिकतर टीवी चैनल्स करते हैं, और ये ट्राई की गाइडलाइंस में इसको पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो एयरवेव्स को है। और अगर इसका ऑक्शन की बजाय एलोकेशन किया जाता है और जनहित के लिए अवेयरनेस के लिए कहा जाता है, तो मुझे तो खुशी इस बात की होती है अगर माननीय सांसद ये कहते कि इस सरकार ने कदम उठाया कि अब सारे ब्रॉडकास्टर जितने भी हैं वो 30 मिनट के लिए जनहित के मुद्दों को संचारित करेंगे, और बहुत सारे करते भी हैं। रेडियो पर तो 1-1 घंटे का होता है सर। हमने 4 मीटिंग्स तो अपनी अलग से की है, चाहे IBDF हो, NBDA हो या बाकी प्राइवेट चैनल हो, सबके साथ बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई है और जनहित में ही इस निर्णय को लिया गया है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय जवाहर सरकार जी। I did not say that Prasar Bharati has failed. I had asked the Honorable Minister whether he finds Prasar Bharati lacking. I have asked 3 questions and none of the replies have been given. Please put your second question. Sir, my second question is that A was, why did you issue it? Now you go and tell me what has been done. Please question. I had asked whether Ramayana and Mahabharata would fit in public service broadcasting, and whether this public service broadcasting can be adjusted
or fresh programs need to be done. None of these have been replied to, sir. Thank you. This list is not exhaustive. Other issues of national importance and social relevance can be added to that. It is very open and clear, and we are not restricting the TV channels to do it to up to on those 7 itself. They can look at other issues of national importance and social relevance. उसमें तो कहीं कोई बंदिश ही नहीं है. We have left it very open. और इसमें कोई बंदिश नहीं है सर. ये कोई वॉलंटरी करना है सब कुछ. इसमें कोई ऐसी कोई सख्ती नहीं कि आपको ये करना ही करना है. 30 मिनट के लिए अगर देश के हित में पहले भी बहुत सारे इश्यूज दिखाए जाते हैं, उसमें से 7-8 बताए गए, बाकी ओपन रखा गया है. इसमें तो कोई, मुझे लगता है इसका तो जितना स्वागत किया जाए उतना कम है. तो जनता के हित के विषय हमने उठाए हैं, और जब अब चुने हुए प्रतिनिधि अगर जनता के हित के विषय को कहेंगे कि नहीं करें या क्यों करें, रामायण महाभारत की यहाँ पे कहीं बात नहीं की. नेशनल इंपॉर्टेंस के कोई भी विषय होगा जो चैनल्स को लगता है उसको स्वागत योग्य है. थैंक यू. माननीय राकेश सिन्हा. माननीय राकेश सिन्हा. पूरे दिन रामायण महाभारत ही दिखाओ. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग है, जिसमें अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, जैसे आजकल है, कुरुक्षेत्र है, योजना है. इन पत्रिकाओं का रुख और प्रवृत्ति और जो उसका कंटेंट 1950-60 की दशक की तरह ही चल रहा है. उसे संदर्भ अनुकूल और जुगानुकूल और नई पीढ़ी के अनुकूल बनाने के लिए क्या कोई प्रयास हो रहा है? थैंक यू. इसको सुझाव के रूप में लेता हूं. धन्यवाद. माननीय एमएम अब्दुल्ला जी. माननीय एमएम अब्दुल्ला. ऑनरेबल एमएम अब्दुल्ला. Honorable Deputy Chairman, sir, thanks for the opportunity given me to ask the supplementary question on question number 94. Sir, my supplementary is whether the priority for regional language programs will be given in this 30 minutes of airtime for public service broadcasting, and it will fit in these guidelines. Thank you, sir. Thank you. Sir, except sports channels, we have asked other channels to do the program for 30 minutes as per their convenience. There is no time slot for them, no language bar for them. It is left to them only. The list is not exhaustive. They can add other issues of the social relevance in the regional languages also. And the government of India is time and again, is in consultation with various channels. चाहे वो प्रसार भारती के रीजनल चैनल्स हो, वहाँ पर भी रीजनल लैंग्वेजेस में अलग अलग प्रोग्राम्स को दिखाया जाता है. और पब्लिक ब्रॉडकास्टर के अलावा जो बाकी चैनल्स हैं, अगर वो रीजनल लैंग्वेज में ही है सर, तो उनको ये उचित ही होगा कि रीजनल लैंग्वेज में ही वो 30 मिनट के प्रोग्राम को दिखाएं. दिन के किसी समय में भी वो दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक समय में दिखाना है. थैंक यू. माननीय राघव चड्ढा जी. माननीय राघव चड्ढा जी. हो गया. सर आप खुद एक अन्य सदस्यगण कृपया ध्यान रखें कि आपकी पार्टी के अगर किसी मेंबर को पहले मौका मिल चुका है तो चेयर के पास बड़ा सीमित मौका होता है. एक ही पार्टी और एक ही समूह को अगर बार बार हम एक सवाल पे मौका दे तो चेयर का बंधन और सीमा आप समझते हैं. इसलिए प्लीज, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा है, अपने नाम भेज दें और उस प्रक्रिया का पालन यहाँ होता है जिसके तहत आपको मौका मिलता है. माननीय राघव. डेप्यूटी चेयरमैन सर, आप खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं और खबरों के महत्व को समझते हैं, और कैसे इस देश के अंदर सवाल जी कैसे इस देश के अंदर न्यूज अब नॉइज में तब्दील होती जा रही है. मेरा सवाल बड़ा सरल है सर. इस देश में अधिकतर चैनल शाम 5 बजे के बाद रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं. मेरा सवाल बड़ा सरल है माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से, कि क्या उन भड़काऊ चैनल्स और उन भड़काऊ एंकर्स के खिलाफ सरकार कोई योजना लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और कर रही है तो क्या कर रही है, वो सदन को बताया जाए. धन्यवाद. सर, मुझे लगता है इसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर जो नियम भी कहते हैं, 3 चरण पर इसकी हमने प्रक्रिया है. पहली, अगर आपकी ऐसी कोई शिकायत है तो जो चैनल इस तरह का प्रोग्राम करता उसी के स्तर पर उसका निवारण होगा. उसके बाद जो एसोसिएशन है उसके स्तर पे होगा. अगर नहीं होता है तब इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास आएगा. और अभी तक आपकी कोई भी ऐसी शिकायत, आपकी मीन्स आप वैसे जनता के बीच में से ऐसी कोई शिकायत ऐसी अभी नहीं आई है जहां पर ऐसे भड़काऊ या कोई ऐसा आपको लगता हो. अगर आपके पास ऐसी किसी चैनल के प्रति कोई शिकायत है तो मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद हमें निश्चित तौर पर लिख कर दें,
और नियम के अनुसार जो कार्रवाई होगी 3 टियर सिस्टम है, उसमें पहले चरण पर ही उसका निवारण हो जाएगा। अगर नहीं होता, अगर तीसरे पर भी आती तो डिपार्टमेंट वहां पर कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। हम ऐसी शिकायतों पर अवश्य देखेंगे क्या कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसकी सर 3 टियर सिस्टम है जिसमें चैनल के स्तर पर सबसे पहले निपटा जाता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 95 डॉक्टर सस्मित पात्रा। 5 माननीय मंत्री जी। Deputy Chairman sir, the answers laid on the table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाली यात्रा उड़ीसा के कटक में होता है, कटक शहर में, जो कि भारत के गौरवशाली इतिहास को और विशेषकर उड़ीसा में जो सी फेयरिंग, जो साधुबौद्ध थे, हमारे सेलर्स थे, जो इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, जावा जाते थे, उस ट्रेडिशन को फिर याद दिलाता है। उस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने एक रिक्वेस्ट भेजा था कि उसको नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज फेस्टिवल के तौर से उस पर स्टेटस दिया जाए। मेरा पहला सप्लीमेंट्री इस माध्यम से है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के माध्यम से उनका कोई परव्यू नहीं है, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस तरह के जो बाली यात्रा जैसे हमारे हेरिटेज फेस्टिवल्स हैं, क्या उनके लिए कोई मापदंड तय करेगा फॉर अ नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज लिस्ट, जिससे कि आगे के दिनों में केवल बाली यात्रा नहीं, ऐसे कई ऐसे विषय हो सकते हैं देश में जिसको कि उस लिस्ट में शामिल किया जाए। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में 8 नवंबर 2022 को ही आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट के साथ, जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, उसके डिवीजन के साथ में एसओए जो के माध्यम से ये फेस्टिवल को इसको उत्सव को मनाया गया, और वो भी कटक में भी मनाया गया, भुवनेश्वर में भी, और उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार ने ये तय करवाया कि जो भारत एक ऐसा देश रहा जिसका साउथ ईस्ट एशिया और अन्य देशों के ऊपर ट्रेडिशंस में, कल्चर्स में, ट्रेडिंग एक्टिविटी में बहुत अधिक महत्व था, और इंडियन ओशन भारतीय के नाम पर जो एक समुद्र है उसका भी नाम रखा गया। तो उसकी महत्वता को सामने रखते हुए, समकक्ष रखते हुए, इसके ऊपर बहुत ही विस्तृत रूप से 3 दिन का जो है उत्सव मनाया गया है। और प्रोजेक्ट मौसम भी एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, उसमें इसके विभिन्न अंगों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। विभिन्न देशों के साथ बातचीत इन सब विषयों पर चल रही है, और बाली यात्रा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बाली के अंदर भी इसी उत्सव को मनाया जा रहा है। तो ये जो संगठित रूप से इस पर काम किया जा रहा है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। धन्यवाद करता हूं, उन्होंने जो पहला अपना उत्तर दिया है और उसमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विषय दिए हैं, उसी पर मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। उन्होंने कहा है राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है, तो क्या मिनिस्ट्री इस बारे में सोचेगी कि राष्ट्रीय स्तर पे और बाली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ICCR है और दूसरी हमारी एजेंसीज है, उनके माध्यम से बाली यात्रा जो कटक में उड़ीसा में होता है उसका और प्रसार प्रचार किया जा सके? धन्यवाद। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, उसका प्रचार प्रसार भी है, लेकिन उससे ज्यादा जो बड़ा विषय है वो ये है कि एक और उत्सव है जिसका नाम है मस्कापान के तुकड़। ये मनाया जाता है बाली के अंदर। तो आगे की व्यवस्थाओं में जो मैंने पहले एक और सदस्य अभी है नहीं, अमर जी और अन्य सदस्य जो हैं बीजू जनता दल से ही हैं, उन्होंने भी इस विषय पे मेरे से बात की थी। तो मैंने कुछ आग्रह किया था उनको कि इसको अगर आप उड़ीसा के किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रॉपर डॉजियर रिसर्च करवा के हमको मदद करेंगे तो हम इस विषय पर आगे सोच सकते हैं। और मैं अपनी बात को आपके माध्यम से दोहराना चाहती हूँ कि उड़ीसा सरकार, राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी जो इसकी संबंधित रिसर्च है एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक की, उसके ऊपर थोड़ा काम करें। और उसी प्रकार से हम इंडोनेशिया से भी बात करके बाली का जो इतिहास है और उसमें जिस तरीके से वो मस्कापान के तुकड़ का इतिहास है, उनको हम जोड़कर कुछ विचार किया जा सकता है। धन्यवाद।
Dr. L. Hanumanthaiah ji, it's good that you are asking question related to National Maritime Heritage Festival status of Bali Jatra of Cuttack. The question relates to Cuttack. No, I have other issues also in this, sir. So you have to put your question on Cuttack and Odisha. Yeah. I know you run the house. Sir, my concern is the answer given in the question. There is no scheme for giving status of National Maritime Heritage Festival to Bali Festival. But I suggest the government, why not the Culture Department has to take the cognizance of historical festivals like Dasara in Karnataka, Hampi Utsav in Karnataka, which has got UNESCO recognition. And some are important historically, some are important religiously. So the department has to take the cognizance of these across the country and recognize them as nationally important festivals, which will be धन्यवाद धन्यवाद माननीय मंत्री जी ये सुझाव है माननीय सदस्य का खुद उन्होंने कहा दिस इज माय सजेशन तो आप पे निर्भर है आप जवाब देना चाहें तो दें जी नहीं मैं खाली आपकी अनुमति से उसी बात को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहती हूँ और वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में दुर्गा पूजा को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज ICH का जो दर्जा मिला उसमें भारत सरकार ने काम किया है और भारत सरकार ने दुर्गा पूजा को वो सम्मान देने का काम किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत सरकार लगातार इस प्रकार के प्रयास करती रहती है और ICH के अंदर हर 2 साल में एक हम एंट्री बेच पाते हैं तो विभिन्न समय पर विभिन्न भारत की धरोहर इतनी बड़ी है इतनी अधिक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ नियमितताएं हैं उसके अनुसार हम कभी साल में किसी चीज की एंट्री बेच सकते हैं किसी अन्य विषय पर 2 साल में एक एंट्री बेच सकते हैं और इसीलिए मैंने सस्मित जी को भी कहा कि डॉजियर्स उसके अच्छे तैयार हो उसके ऊपर काम हो और ऐतिहासिक रूप से एकेडमिक रूप से तो भारत सरकार की मदद होती है और राज्य सरकारों में और राज्यों को ये प्रयास करके भारत सरकार के साथ अच्छे संबंध रखते हुए वो भेजनी चाहिए और कई बार हम लोगों ने दुर्गा पूजा में तो 100% जिस प्रकार से भारत सरकार ने काम किया वो आप सबके समक्ष है और भारत सरकार चाहती है कि भारत की धरोहर का पूरे अंतर्राष्ट्रीय और पूरे विश्व में नाम रोशन हो धन्यवाद डॉक्टर फौजिया खान जी Question is on Jatra of Cuttack. The minister can consider, like, Maharashtra has a rich maritime culture also. Here, the incorporation of Chhatrapati Shivaji Maharaj's naval ensign Akshoni, it in the INS Vikrant is an important testimony to it. So does the government plan to set up a national maritime heritage complex in Maharashtra as is being set in Lothal, Gujarat? Thank you. If not, the reasons therefore. Thank you. Honorable Sir, the India's maritime history needs to be celebrated by people across the globe because somewhere that has been neglected. The fact is that our maritime history is as old as a few centuries before Christ. Many ports are found in Orissa, which are 4th, 5th century before Christ. Lothal happens to be the ancient most port in India, man-made port. 7th century BC का वो port है, 7th, 8th century BC. So comparison between Lothal and the maritime history in Maharashtra, it's uncomparable. They cannot be compared with. So far as maritime achievements of India is concerned, whether it's Maharashtra or it's Orissa or it's the coastal regions of India, each part needs to be celebrated. And I would request that many actions can be taken by the state governments. Many actions can be taken up by the central government. Central government under Azadi Ka Amrit Mahotsav and various other schemes is encouraging the state governments and is working with them. So if any such proposal or things come, it will be considered on its merit, but state government is also free to take up these issues. Thank you. Honorable N.R. Elango. Son Orissa. Similar one. Honorable Deputy Chairman, I would like to know whether the government is having any plan to declare
Jallikattu festival, which is having 4,000 years of history, and it is also connected with religious sentiments of peoples of Tamil Nadu as a national heritage festival, or in the alternative, to declare it as a preserved tradition under Biodiversity Act. Thank you. Proposal as of now, and any such thing comes, it will be decided on its own merit. And each part, I mean, I can very proudly exhibit, not just before this house, but all over the whole world knows that diversity in India is as wide and vast as it can be thought of. No other country can be compared with. Each state, each part of the country, each village will have its own festival, its own festivities. I can provide a list that how Government of India is working with all the centers under our zonal cultural centers. We try to celebrate right from Indus festival to Dasara in Maharashtra, and lay from north to south, east to west. We work with every state, and if there is any requirement of any such grant or working with Government of India, we'll welcome that. But National Heritage Festival, we cannot choose one over the other, and I'm sure member would appreciate that. Thank you. Question number 96, माननीय श्री कपिल सिब्बल जी। माननीय मंत्री जी। उत्तर माननीय ब्रिजलाल जी। धन्यवाद डिप्टी चेयर। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में चंदौली में चंद्रप्रभा सेंचुरी रही है, जहाँ पहले से लायंस वहाँ पर लाए गए थे, लेकिन पिछली गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के कारण अब वहाँ एक भी लायन नहीं है। सवाल क्या सरकार चंद्रप्रभा सेंचुरी चंदौली में गिर लायन को दोबारा बसाने का प्रयास करेगी? धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, हमारे देश को इस बात का गर्व है कि हमारे देश में एशियाटिक लायन 100% केवल हमारे देश में है, और वो सभी गिर के क्षेत्र में हैं। न केवल गिर का क्षेत्र, विशेष रूप से सौराष्ट्र, जिसमें जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, ऐसे 53 तहसीलों में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। और गुजरात सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उसमें ये जो शेर हैं, इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है। गिर के आसपास गिरनार, सावरकुंडला और पानिया सेंचुरी भी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया। इनके संरक्षण, इनके विकास के लिए इनका जो नेचुरल डिस्पर्सन है, वह काफ़ी ज़्यादा इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक है, और वो क्षेत्र केवल गुजरात के अंतर्गत ही आता है। इसलिए अभी जो सरकार की योजना है, इनका नेचुरल डिस्पर्सन और बगल के क्षेत्रों में हो, और गुजरात में ही इनको रखे जाने की योजना। धन्यवाद। माननीय नदीमुल हक जी। Supplementary, sir. Sir, Project Lion is something that is very close to our hearts. I would like to ask the Minister that how much fund has been allotted for this project, and is there any plan to increase this allocation? Thank you. Sir, Project Lion के अंतर्गत प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसके साथ साथ 2 और विषयों पे हम काम कर रहे हैं। अभी चीतों की पुनर्स्थापना करी है, और एक और जो हमारा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है डॉल्फिन, उसको लेकर भी मंत्रालय के द्वारा योजना तैयार की जा रही है। हमारे देश में लगभग 22 ऐसी प्रजातियों की पहचान की गई है जो एंडेंजर्ड हैं और पूरे देश भर में व्याप्त हैं, जिसमें स्नो लेपर्ड है, एशियाटिक लॉयन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, डॉल्फिन है, मणिपुर में हमारे हंगुल है, कुछ हमारे जो टर्टाइल हैं, उसके बाद ईडेबल नेस्ट स्विफ्टलेट है, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो है, शंघाई है, मालाबर सिवेट है, इंडियन राइनो है,
तो सभी के लिए मंत्रालय के द्वारा अलग अलग योजनाएं की जाती है और पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। जहां तक माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक राशि की पूछी है, मैं तथ्य संज्ञान में लाकर आप तक पहुंचा। माननीय कांता करदम जी। धन्यवाद सर। कांता माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार के देश में वन क्षेत्र के विस्तार के लिए कोई नए प्रयास करने का प्रस्ताव है? माननीय कांता जी, हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 2 PM। पुरी जी भी यहाँ विराजमान है। राजस्थान में जोधपुर क्षेत्र में एक गैस ब्लास्ट हुआ जिसमें भुंगरा गांव के बहुत सारे एक ही परिवार के लोग उसके में चल बसे। आज भी हॉस्पिटल में जो लोग हैं, डॉक्टर अगर बाहर निकलते हैं तो वहाँ से एक ऐसी आहट होती है कि कहीं और कोई चला तो नहीं गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा कि उस गैस जो ब्लास्ट हुआ है उसकी एक यहाँ से जांच करवाई जाए, क्योंकि वहाँ के डीएलओज और वो जो है वो लिपापोती कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी एक जांच बनाई जाए टीम, और उस जांच टीम में ऐसे जो दोषी है उन दोषियों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। बहुत बहुत श्री असित कुमार मल्ल जी। Honorable Chairperson, sir, recently central government has rejected very old scholarship of SC, ST, OBC and minorities pre-matric students. As a result, a few core applications are null and void. Both formal and residential students would receive 750 rupees and 1000 rupees at a time as book grant respectively. Both central government and state government jointly share this amount at the rate of 75% and 25%, but they are deprived of this monetary help which enabled them to run their education. Now a few core students of the downtrodden communities will have to face a severe financial critical situation. So I would like to draw the kind attention of the Honorable Prime Minister to take back this capricious decision to give opportunity of education to a few course for its children. And this is my bending request. Thank you, sir. श्री अनिल फिरोजिया। कहाँ है अनिल जी? सामने खड़े सर।
हम पहचानने में नहीं आते ना आजकल आप। जी प्लीज। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 40 kg महत्वपूर्ण विषय मुझे सदन में रखने का अवसर दिया। माननीय सभापति जी, 90 के दशक में उज्जैन में टेक्सटाइल हब हुआ करता था। हीरा मिल, इंदौर टेक्सटाइल, विनोद मिल, समय काल के गर्त में वो धीरे धीरे सब खत्म हो गए। लेकिन बाबा महाकाल के अलावा वहाँ उज्जैन में रोजगार के कोई साधन नहीं है। मैं आपके माध्यम से कपड़ा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 7 टेक्सटाइल हब देश में देने का निर्णय लिया है, उसमें से आप अगर एक टेक्सटाइल हब उज्जैन में अगर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रतनलाल कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरी लोकसभा अम्बाला शहर के धूलपुर रेलवे स्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूं, जो कि बहुत पुराना स्टेशन है, जिसके नज़दीक वीर जी की कुटिया बनी हुई है, जो 10 एकड़ में है, जिसे गीतानंद जी महाराज द्वारा स्वयं बसाया गया था। यहाँ इस कुटिया में दूर दराज से लाखों लोग सत्संग सुनने आते हैं। धूलकोट रेलवे स्टेशन नज़दीक होने के कारण लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है। यह कुटिया और धूलकोट रेलवे स्टेशन गीता नगरी नामक स्थान पर बसे हुए हैं। आज जब देश और विदेश में गीता का प्रचार बढ़ रहा है और लोग गीता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में इस श्रद्धा के केंद्र का महत्व और बढ़ जाता है। मैं सदन में मांग करता हूं कि धूलकोट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गीता नगरी रखा जाए। मंजुलता मंडल जी। जी। Thank you very much, sir. I would like to draw the kind attention of Honorable Minister, Rural Development regarding increment of several monthly pension under the scheme, such as number 1, Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, and Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, and National Disabled Pension Scheme, and lastly National Family Benefit Scheme under National Social Assistance Program. At present, the different eligible beneficiaries are getting monthly pension under the scheme from central share with state additional top-up share. The said monthly pension amounts are not sufficient enough for the beneficiaries to maintain their livelihood. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, short duration discussion on the subject is, it's very important, serious effects of global warming and the need for remedial steps to tackle it. माननीय तिरुचि शिवाजी, Honorable Sri Trichu Siva, Sri Pramod Tiwari, Sri Sandosh Kumar P. to raise a discussion on the serious effects of global warming and the need for remedial steps to tackle it. Mani Trichu Siva ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I thank you personally for having given me the opportunity to initiate a very important discussion. And I thank the government for having taken up a short duration discussion, which we have been asking for long. And that too we have chosen today, the global warming, that's a climate change, which is threatening the entire world at large. Sir, the learned minister is here. He is taking very serious and sincere efforts. First, I appreciate him. Sir, I just don't want to take this debate as another debate, like what the COP
conferences and other conferences across the globe have resulted in nothing. And this debate at least would fetch some concrete results, that it would address the prevailing issues with regard to the climate change. So I think it would be a very healthy discussion, sir, because we all have a concern about the future and the present also. What is looming above our head is very, very alarming and threatening. And I feel that it is not the prerogative of only the union government. It is also of the state governments. It's also of the private sectors. It is also of the civil society. Myself, yourself, and everyone in the country, we have our own responsibility. Sir, global warming is a contributing factor for climate change. Climate change is change in temperature, the humidity, the air, the wind, and the precipitation factors. Global warming is a quite phenomenal, very natural in nature. Earth by itself produces some greenhouse gases like carbon dioxide, nitrous oxide, and methane. So it is a process of the earth. When animals and the plants decay, they emit gases, and the plants absorb them. So this was a natural process. And these greenhouse gases emission was very much necessary. Otherwise, sir, the scorched wood has to be trapped. If not that, the earth would become an ice plant. It would get precipitated, it would get frozen. So these greenhouse gases trapped the sunlight and protected the earth so far as long as man intervened. Nature was protecting itself and the lives also. But the man started emitting greenhouse gases, which was exorbitant and increased the temperature in the air, and it also, the humidity, the rise in the sea level, everything. So everyone knows, sir, I don't want to give any data, what are the statistics, which are the reasons, which are the causes. Yes, of course. We should see the cause, the effect, and the responsibility, the remedial responsibility. We are not only the cause, the whole world is the cause for it. The effect is upon us more. India will be the 7th country to be affected because of this climate change. And remedial measures everyone has to take. So the COP27, which was expected again after many such meetings, resulted with no result. At last it came out with some, the intention was to create a corpus fund of around $100 billion US for the developing countries to face the climate change. I don't know how far it will help. Our environment minister has evolved some strategies. He's working on it. And I should say I'm from the state of Tamil Nadu. We have our own responsibility. So the target of the union government is by 2070, there will be zero carbon emission. Am I right? I think. It is around 50 years from now. But I'm scared of 2040. What was in 2000 and what is in 2020, we can see the variations. The threat has increased. The alarm bell is ringing like anything. I don't think 50 years waiting, how far? So I think the measures have to be very urgent and very immediate. Tamil Nadu government has evolved some policies. Our Chief Minister, Mr. Stalin, has announced that we would achieve the zero carbon emission even before 2070. By 2030, our energy, electricity generation, 50% of it will be from the renewable energy. And for that, it has not just stopped with an announcement. We have started solar project with an investment of 70,000 crore. With an investment of 70,000 crores, sir. So, should not be just with words. We have got some other schemes also. I think I'm very happy to say that because other states can also follow that and the union minister will appreciate that. We have got the Tamil Nadu Climate Change Mission, Green Tamil Nadu Mission, and Tamil Nadu Wetlands Mission.
And we have also established a special purpose vehicle called Tamil Nadu Green Climate Company. Sir, Tamil Nadu has got a coastline of 1,076 kilometers. And we have started afforestation, growing mangroves. So we just don't stop at expressing our concern, pointing fingers like at others, as in the global conferences. Everyone is pointing that the developed countries are the reason. That doesn't solve the problem. Everyone has a responsibility. Sir, we are going to leave our generations to live. We may leave them with education. We may leave them with property. We may leave them with many other things. But whether they will have water to drink, whether they will have air to breathe, or even food to eat, this is a very big question, sir. Sir, I imagine that. Maybe it is not a hallucination. It is, of course, waiting. It's real. The sea level which is rising will take off many of the coastlines. And in 2040, scientists say that blue means only the sea, not the sky. And you have to get into a boat and reach no point where, because you won't be able to live. What we see today is dead rivers are dead, forests are disappearing, peasants are displacing, and the sky is smoking. Sir, all these are alarming. What can we do? I say the governments, I say the individuals, including Agarwalji. Yesterday, sir, when I was flying, no, the recent sun that scorched Rajasthan, Uttar Pradesh and New Delhi, and the frequent floods in southern India, that too in Tamil Nadu, the recent Mondes cyclone. So, sir, it is of course very certain that frequent cyclones will be there. There will be more droughts. Fertile lands will turn into dry lands. So where will you go for food? Sir, there is one question for which two answers are there. What will be the future of the world after 20 years? The first reply is, the world will be ruled by artificial intelligence. Robots will be doing everything. Man will be comfortable with only luxuries. Sentiments and relationships would have also all gone. That is different. India will become a supernatural power, economic power, everything. The other reply is, how many species will be extinct in it? What will be the life of the living beings? Already it is said that 200 species extinct per day. And it is said after 10 years, 10,000 species will be extinct. Not numbers, sir. 10,000 species will be extinct. And human life will also be included later by and by. So this one question, after 20 years, we are living in an utopia that we will be having artificial intelligence and we are educated, we are rich, we have money. But where will you go for food? We cannot eat money. I'm bothered. See, after 20, 25 years, we may not be there, but our generations will be there. What are we going to leave for them? Sir, this is very, very serious, sir. And that's why I said everyone has got a responsibility. Yesterday, when I was flying in the flight from Chennai to Delhi, in the business class, before serving the meal, they spread a towel before the table. And it was a thick material. I said, I don't want that. I said, why? She asked why. I said, the table is number one, neat. Number two, without being much used or soiled, you will collect it and put it for washing. It will consume more water, detergent. And for nothing, I'm wasting water, I'm using detergent. And you know what the next passenger to me sitting was doing? The air hostess appreciated me. He was looking at me as a stranger. As if I'm not having proper etiquette or something. They see, we live in a false world. What all these things? Sir, when we go to your marriage, for example, we are all considered to be important persons. We go to a marriage function or any function. There they give us water in a PET bottle. We drink only a little and leave it there. So many PET bottles are there. Water is also wasted. So what I do, sir, whenever I go, I think nothing wrong. I'm very happy to share that here. I also tell the students, whoever I go to address, whether in a school or college, I carry the bottle along with me. Number one, I'm saving water. Number two, I'm not dumping plastic in a place.
See, we see whales found dead in the sea, in their stomachs, tons of plastic. Elephants in the forest. Sir, a month before, in Mettur Dam, everyone knows, it's a very big dam in Tamil Nadu, which serves to the, caters to the needs of the irrigation and drinking purpose. Just nearby Mettur Dam, sir, it was a 30-second news on TVs. 10 tons of fish were dead and floating for no reason. Nobody followed it. Nobody bothered about it. They are fluent. Sir, I request the minister, it is not only your responsibility. We understand. It is not a blame game. You are not doing this or that. We have some reservation. That apart, I am discussing a very important issue. With concern, with responsibility. That's why I said this debate should bring an outcome, not in the COP27, but today in the Rajya Sabha, we have come with a concrete idea, with a concrete scheme. Means I think this debate will be a very useful debate. You have to coordinate with other ministers. For example, the agriculture ministry. The fertilizers that are used in agriculture produce more nitrous oxide. So we have to return back to organic farming. And so also urban development. So construction should not come on drainages, on watersheds, wherever. And industries minister. See, methane, it is 21 times potent than carbon dioxide. Sir, in California, recently, there was a leakage in a methane storage. And it was nearly 5 billion cubic feet, which is equivalent to the emission of 6 lakh vehicles per day, automobiles. They took 3 months to control that. Today, this morning, the Minister for Science and Technology was replying about the nuclear project in Tamil Nadu. He said, Kalpakam. Kudangulam and Kalpakam, he said, when someone raised an apprehension that what are the plans you have for the nuclear waste? He said, we have not experienced any leakage so far. What is this, sir? You cannot find a solution only after having met with an accident. You have to something well prepared to stop that. Sir, when we say that to reduce the electrical generation by way of producing more renewable energy, by way of solar projects and all, Tamil Nadu is potent with wind power. The amount of quantity of power generated through nuclear power in India is equivalent to the wind power generated in Tamil Nadu. You have to think about all those things. So many, the Rajasthan is there, Gujarat, there, solar projects could be concentrated. In spite of that, our government is attempting to increase nuclear power by 3 times in the coming years. You may generate power because we are going to substitute electrical vehicles in the place of fossil fuel vehicles. But that, when nuclear project has come in, the big question before us, the apprehension rather, genuine apprehension, what you are going to do with the nuclear waste? And we cannot think about the nuclear waste toxic thing, what would happen to the world. We still think of what happened in Bhopal, just there. It is not a nuclear one. Bhopal tragedy, we still remember. What happened in Chernobyl, in Russia. So kindly, diversified activities means must be sensible, practically possible, and we should not harm the human generation in future. Just to fulfill the present needs is not the issue, sir. We should have a foresightedness. We should look into the future, what would happen. So, sir, I think India is third. बहुत गंभीर चर्चा चल रही है. कृपया मोबाइल ना बजे. आप प्लीज प्लीज प्लीज. Hackers. Sir, there are only 10 countries. The emission of greenhouse gases. Yes, Mani Tiruchiji. Sir, please. The emission of greenhouse gases by 10 countries amount to 2/3 of the whole world's emissions, sir. Surprising? The UN has got hundreds of countries. We say 200 countries unknown here and there.
But 10 countries contribute to 2/3 of the total emissions. And we stand in the 3rd place. China is number 1. It is 10.6 gigatons. It was 9.8 2 years before, now it is 10.6. United States 4.7. India was 2.3 and now 2.8. So, sir, I think it's high time we have to think about it. 10 countries are going to raise question about the lives of the whole human community in the world. And Obama said that there is no other threat going to be for the future generation except the climate change. And the successor said, no, no, it is only a hoax. But later, that is not within our purview. But they have contributed more. They are not able to be stopped. And we are also doing. That's why I said initially, it is not only the responsibility of the union government, it is also the responsibility of us. Every individual, civil society, even organizations in the private sector. I think the Civil Aviation Ministry could issue a circular that on board in the flight and everywhere pet bottles should be avoided. This sort of wasting towels and formalities should be stopped. These are all very small things, sir, but contribute a lot. We need water. We need water. Now itself we are suffering. I think Minister is very serious. I think he has evolved many things, but some things I have to bring to his knowledge. We have concern about the Environment Ministry's recent EIA notification, Environmental Protection Act, Water Act, Forest Conservation Act, Biodiversity Act. All these, sir, will result in degradation of forest. We need forests. Only the protection and extending the forest only will save the nation, save the world, save the humans. That's what I said at the outset itself. Whatever gas emission is emitted was absorbed by the plants, but now forests are not. That's why I said forests are disappearing. Glaciers are melting. Ice sheets are going off. Sir, I think he is well-informed minister would accept that there were 10 points that were absorbing the heat waves. Out of that, 4 have already been exhausted. Already 4 have been exhausted. And when the rest are also exhausted, I don't want to say that, sir. I don't want to say that. Huh? Again, human race have to be sorted. Again, I say, sir, we are all here with a responsibility. Every one of us, sir. We should think of our generation. What are we going to leave for them? Not just education, not just properties, not a rich, please. This is what we are. When we say responsibility, the responsibility lies with not only the members of parliament. When we ourselves lack, what would be the common man who are not literate, who are not aware of what is before us? So, sir, I am really participating in this with trembling, sir, because I think above myself. I think about others. I've been taught like that. That's why, sir, my state, which is known for social justice, is also my government, headed by our leader, is striving for environmental justice. That's why 1,067 acre stretch of coastline is being afforested. I think when he comes to know, he would appreciate that. So, sir, these are very, very important and minute things which I would like to highlight and leave it to the rest of the members to share their views, sir. And very importantly, excuse me. Stronger guidelines we need from the ministry, because we are afraid that, sir, many states would suffer very more droughts and worsened and frequent hurricanes, cyclones would befall in the coming days.
and sea would encroach into the city where we are living. These are all only not statistics or imaginations or only hallucinations, sir. It is about the lives of our future. So, if at all, every single thing worthy of living, life has disappeared into thin air, and all we can do is, as I said, do something. As a big part of climate action lies in protecting and expanding forest coverage. I just don't want to conclude my speech with a pessimistic note, with only concern, with serious effects what would cause the climate. I would like to give one or few suggestions, and among them I said what I did, what I do at marriage halls, what I do on the flight, wherever I go. However much possible, I save water. If I go on the way, if I see a tap leaking, I will go and stop that. I will stop my car. Either I will go or I will ask my person to stop that, because I know the preciousness of water. Where 40 feet depth water was available, now it has gone down to 800 feet. So more crops in a single farm. Such things has to be concentrated, and as I requested the minister, he has to coordinate with all the ministers. He has a very big responsibility. He is not just the minister of the union, the cabinet, one portfolio, sir. It involves the future lives of the human, future of the nation, and as well as the world. And going in participating, apart from global summits, we have to do something. So foresting, expanding forest coverage, regulations need to be tightened and enforced to ensure forest protection while acquiring land. For public pressure to drive climate action, we need to consider climate catastrophes as largely man-made. So I leave it to the wisdom of my colleagues, and I expect the minister to give a concrete reply. I think I have initiated a very, very important issue today in this August House, and as I said, sir, let it not conclude like the other global summits, recent COP27. Today, let us come out with a concrete solution. Thank you very much, sir. Thank you, Tiruchu Sivaji, for speaking from the core of your heart. You have initiated very nicely. It's a very serious subject related with the future of humankind and planet. Thank you. Kavita Patidar ji. Kavita Patidar. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। चर्चा में भाग लेने का ये मेरा पहला अवसर है, तो शायद ये मेरी मैडन स्पीच होगी। निश्चित ही ये चर्चा ग्लोबल वार्मिंग एक महत्वपूर्ण विषय है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जोखिमों और उसके आर्थिक परिदृश्य पर तो प्रकाश डालेगी ही, साथ ही जोखिम को कम करने के लिए उपलब्ध नीतिगत विकल्पों से भी पर्दा जरूर खोलेगी। हम आज देख रहे हैं कि पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों सालों से जमी बर्फ पिघल रही है, दुनिया भर के जंगल आग से भस्म हो रहे हैं, समुद्र का बढ़ता जल स्तर आने वाले सालों में कई शहरों को निगल सकता है, कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। हालात बहुत खराब है। हो सकता है कि आज आप और हम सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन को असर उसका महसूस नहीं कर पा रहे हों, लेकिन हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं हम जल्दी गंभीर चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि प्रकृति के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में बदलाव आ रहा है, उससे न केवल लोगों के जीवन और गुणवत्ता को खतरा है, बल्कि उसकी आय पर भी इन बदलावों का भारी असर पड़ेगा। लेकिन ये नौबत आई क्यों? हम अगर देखें तो ये उस वक्त पैदा हुई जब हमारे इंसानी गतिविधियों के कारण पूरे वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैस की मात्रा ज़्यादा बढ़ी और इन मात्राओं ने सूर्य की गर्मी को ज़्यादा सोखा। उसके कारण धरती का तापमान बढ़ा और जलवायु जैसे ये जो परिवर्तन की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हम सबके सामने आई। और इन गतिविधियों का मुख्य जो कारण है वो जीवाश्म जो ईंधन है उसका इस्तेमाल है। और ये जो है जीवाश्म ईंधन है, ये कोयला, पेट्रोल, डीजल और ज़मीन से जो गैस हम लोग ने ली है उसका इस्तेमाल करना इसका प्रमुख कारक हो सकता है। इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति से हुई है, क्योंकि उससे लेकर आज तक इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
30% बढ़ी है। ये हम ये भी कह सकते हैं कि आज वातावरण में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले कभी नहीं थी। और इसका सबसे खतरनाक कारण एक ये भी है कि हमने वनों की कटाई अंधाधुंध से करना शुरू कर दिया है। अभी कोविड-19 के इस महामारी को भी हमने देखा है, उसमें ऑक्सीजन की महत्ता को भी हमने जाना है। पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसकी महत्ता को भी हमने पहचाना है। हमारा इतिहास भी गवाह है कि जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो हनुमान जी ने जड़ी बूटी से भरपूर पहाड़ को लेकर उनकी जान को बचाया था। ये जड़ी बूटी, ये वनस्पति, इसकी महत्ता को जब हम स्वीकार करेंगे तो ये समाधान के रूप में भी होंगे, और इस महत्ता को अगर हम नकारेंगे तो ऐसी समस्या हमारे सामने ज़रूर आएगी। कई रिसर्च बताते हैं कि आज धरती का जो तापमान है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस है, और आगामी आने वाले दिनों में ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। और अगर हालात ऐसे ही रहे और ये बदलाव 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए तो हम महामारी के कगार पर, हम बर्बादी के कगार पर खड़े होंगे। कारण तो बहुत से हैं, मगर इसके समाधानों पर जाना होगा। प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण ये हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। धरती इंसान की ज़रूरतों की भरपाई तो आसानी से कर सकती है, मगर उसके लालच का नहीं। ये धरती कहती हम सब से, तू लालच से अधिकार न कर, तू दोहन कर पर शोषण नहीं, तू प्रकृति का प्रतिकार न कर। हमें इसकी महत्ता को समझना होगा। हम सदियों से नेचर के साथ समन्वय में जीते चले आए हैं, लेकिन पिछले कई दशकों से हुए स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप से स्वरूप सामने आया है वह चिंता का विषय है। यह बात मानव कल्याण के लिए अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा तो है ही, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इन समस्याओं का मुकाबला करने के लिए कुंजी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। लाइफ का दृष्टिकोण एक ऐसी जीवन शैली अपनाना है जो हमारे धरती के अनुरूप हो, इसे नुकसान न पहुंचाए। जीवन पद्धति का बदलाव करना ही होगा। अब हमें ऊंची उष्णता को शीतलता से भरना ही होगा, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन में पंचामृत का मंत्र दिया। इस पंचामृत के मंत्र के अनुसार पहले जो बात कही, भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 मेगावाट तक लाएगा। दूसरी बात, 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। तीसरी बात, भारत अब से 2030 तक अपने शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। निश्चित ही इन पंचामृत के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या का समाधान पूरी दुनिया के सामने रखा है। भारत इस वैश्विक चुनौती को लेकर पूरी तरह सजग है, और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की पूरे विश्व में सराहना हो रही है। इसे देखकर आज दुनिया के सारे विकासशील देश ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जॉनसन की बात दोहरा रहे हैं, और वो सत्य भी है कि 1 सन, 1 वर्ल्ड, 1 ग्रिड और 1 नरेंद्र मोदी। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में पर्यावरण के क्षेत्र में समाधान कारक देश के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, और हमारे निर्णयों ने ये साबित कर दिया है कि हम पर्यावरण के लिए सबसे ईमानदार देश हैं। इन निर्णयों में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सब्सिडी, पेट्रोलियम में भारत का सीधे स्टेज 4 से स्टेज 6 पर आना, हरित क्रांति,
जैविक खेती, जल संरक्षण, वर्मी कंपोस्ट, हमारी कुछ योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, स्वच्छता अभियान, चरणबद्ध वृक्षारोपण। और जब वृक्षारोपण की बात आती है तो चूंकि मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूं, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, जो रोज प्रतिदिन एक पौधा लगाकर इस दुनिया को बृहद वृक्षारोपण और पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। वैश्विक मंथन के बीच इन सभी निर्णयों ने ये साबित कर दिया कि जलवायु की इस चुनौती से निपटने में भारत के नेतृत्व में ही सफलता प्राप्त हो सकती है। और हम सब तो कहते ही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन आज इस समस्या का हम सबको मिलकर समाधान करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जितने भी प्रदूषण हैं उसको दूर करने के लिए हमको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। धरती हमारी एक साझा विरासत है जिससे कोई एक देश या एक शहर प्रभावित नहीं होगा, उसका खामियाजा सारी मानव जाति को उठाना होगा। ऐसे में हमें तय करना होगा कि हम अपने लिए कैसा भविष्य चुनते हैं। वक्त आ गया है कि जब किसी को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को से निपटने के लिए सामूहिक, व्यापक और समग्र रूप से लड़ने के लिए कहे तो हम सबको अपना कदम आगे बढ़ाकर इस जिम्मेदारी को उठाना होगा। इन सब पर महज बातें नहीं, इन सब पर अब काम करना होगा। हम सब मिलकर समाधान पर साझेदारी से काम करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को विराम करती हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद कविता जी। डॉक्टर अम्मी याग्निक जी। Thank you, sir. The topic is a very important one, touches everyone across the globe. And today we are taking up this topic at a time when we have made promises to the world about how we are going to curb the effects of global warming. Sir, the topic is serious effects of global warming and the need for remedial steps to tackle it. Sir, climate change has been varying across time scales for centuries. And it has started from individual to a collective effort at the activity of the human beings. We talk about global warming and we talk about climate change. At national level or international level or in academic circles, they are used interchangeably. So they can be used either global warming or climate change. But to understand what is global warming, it's a very basic thing, but I will still make a point that whatever comes from the sun by way of sunlight and touches the earth, 30% of it goes back because it is sent back by clouds, by particles, by ground surfaces, whatever, and 70% is retained by oceans, land, and air. But the 30% that goes up in the space, not only does it come back little slowly, but it stays there and it becomes a concentrated form, and that is causing global warming to the earth. So this global warming was taken very seriously, and we had United Nations Framework Convention on Climate Change, which sets rules. And then thereafter we had the Montreal Treaty, Montreal Protocol, and the Kyoto Protocol, where all countries are parties. That is why we have conference of parties at various fora. We had it in Paris, that was COP26. We had it in Egypt, COP27, where all the countries, conference of parties come and make their statements. So the issue why this is grave, as a student of science, because the atmosphere cannot be claimed by any one country. The emissions which have been emitted maybe from the United States or from Japan or from Singapore or from India, they travel anywhere. Whatever goes in the air doesn't have a specific space, and that is why here we are negotiating all the climate change clauses at conference of parties, what a particular country should do and what a particular country should contribute in order to curb the effects of climate change or global warming. That is the crux of the whole thing, sir.
So due to global warming, India has faced several serious issues and problems. Larger ones are, one is the agriculture sector. 50% of our people are working in agriculture. Second is the industrial sector. Third is the cattle that is associated with agriculture sector, the belching by the cows, the methane that is produced by way of decaying corpses of animals, and thirdly, sir, mainly vehicular pollution. All these pollutions are emitting certain kind of methane, nitrous oxide, and especially chlorofluorocarbons. Sir, chlorofluorocarbons are by the industrial sector and the refrigeration sector. So these two sectors give out the most of these chlorofluorocarbons, which are known as greenhouse gases. And these greenhouse gases have a greenhouse gas effect, which is causing global warming. So we want to go back to that standard of 1.5 centigrade temperature, and that is why we are rushing towards meeting our targets. So global warming is an issue that has to be now taken very seriously, as my earlier colleagues have pointed out, that in daily life also we can contribute. We can also contribute at policy level, but the most important is that to curb this, we'll have to come with very drastic steps. And India has committed to these steps internationally on these COP27 and 26 fora. But sir, what are these gases? What do they do? So when these refrigeration gases are manufactured, these are freon and refron. So they also spill over the land. In one of my matters, these gases had gone also to the land surface and then gone to the water level. The water contained fluorides, so the water would look very clear when you look at it. But when you drink that water with that fluoride content, it will cause problems to your body. You will age, and the cattle will be destroyed, the vegetation will be destroyed, and the cattle will have mottling of teeth and wobbling of limbs and all that. So these effects slowly come to the surface, and that shows how these gases which are manufactured or the raw material that is stored in open spaces. Please, पीछे बैठकर बात न करें. चर्चा हो रही है, गंभीर चर्चा हो रही है. Please. Open spaces cause this kind of global warming problems. This is here to stay. But to curb these problems of the industry, there has to be monitoring. These are air pollution matters, and it also came to my notice and also came before the Honorable Court when this matter was taken up, that the equipments to measure these pollutants which go in the air are not very effective, and we need to be modernizing them. This is one aspect, sort of greenhouse gases, causing so many problems. So the cattle and the agriculture are also a main contributor. And a third contributor is, sir, that we need to go for change of transition in energy. Transition in energy means we are talking about going from coal to renewable energy. We are thinking of a new kind of energy which is got from solar power, or we are getting it from other renewables, because we have to cut down our fossil fuels. Fossil fuels is mankind indulging into the use of oil and coal, sir. Now this fossil fuels is the main factor or the main argument when it is coming to negotiations internationally, because our country has been using fossil fuels for a very long time. We have committed to curbing down or bringing down our emissions by 2017 net zero. India is committed at the international level. Sir, how can we do it when we are having 70% of our power production based on thermal, on coal? Coal is the main issue where you get emissions. And this is not going to be scaled down unless we have cut down on our thermal power stations. So these power stations are one of the main contributors. Now we do not have a roadway or a road map, because despite committing that we will cut down on our coal production, on our thermal production based on coal,
Our country has auctioned, I think, as many as 100 and more than 100 coal mines. So we have brought in private players. So on one hand, we are committing to kind of net zero emissions, but on the other hand, we have committed to the private sector coal mining. So where are we cutting down on our coal? Along with the coal-based thermal power stations, sir, we also need to look at what happens to the ash that comes out, that ash that is transported. So this is another corresponding thing along with the thermal power stations. We have not been able to cut that down. So second thing is the crop pattern. You have to change the agriculture pattern in the country. Now, most of the time, when I'm talking about climate change and climate negotiations, I think of the women who contribute in the agriculture sector. The women, they adjust to these changes in the patterns, how to bring their crop out, how to yield, to bring another crop, how to change the pattern. And these women are hardly given any lessons in global warming or climate change. Yet, they adjust themselves, they adapt themselves to the changing pattern. And that is, I think, where we should get some learning out of these women who manage most of the agriculture sector in the farmlands. So other thing is that the industrial pattern. Here the third commitment comes from clean energy. The clean energy requires a lot of investments in the industrial sector. Is there a roadmap to see that we bring these investments in the industrial sector in order to see that we give them clean energy and stop giving them the energy that is got from these power stations? Sir, their investment, if we look at the budget, because today I'm not talking on the finance part or the budget commitments by the finance ministry of the country, I'm trying to see how do we curb the serious effects of global warming. Now, if that budget allocation is not increased for that clean energy to be given to this industrial sector, which is increasing today, let us say, because we talk about Make in India, we want to be a manufacturing hub, we want to shift from other country to our country, where is that budget to bring in this kind of a clean energy investments? That budget is declining. Sir, I do not want to give data today. Today is not the occasion to bring in all these kind of data, but we are failing there to attract investments in the clean energy sector. So the fourth point is the renewable energy sector. So we are talking about the sun, we are talking about renewable energy from other water sources, but we are unable to see that we have our own solar manufacturing, solar panel manufacturing. Sir, 80% of our panels are coming from China. Where do we have our solar panel manufacturing, where we can have solar roofs, where we can have these solar panels on the roofs? Sir, we also have, India went for a rooftop policy, solar rooftop policy. And I find that solar rooftop policy has failed somewhere, in some places very miserably. The Honorable Minister of Environment Forests is here, and I would like to bring to his notice, sir, there needs to be a relook into this policy of the solar rooftop policy, and also see that unless and until we manufacture solar panels domestically, I think this solar scheme will not be effective. Also, there's a need to look at the wind energy, sir, because the coastlines, when somebody is traveling along the coastlines of either Gujarat or the south of India, you find number of wind energy power windmills. But somewhere, I think because of some electrical power grid issues, sir, this is also another factor which is coming to my mind when I see all the statistical data. Unless and until these things are not improved, sir, the shift to renewable energy, to solar power, despite making laudable ambitions or setting targeted goals, we will not be able to achieve these net zero targets. Sir, the other important aspect is that when we talk about clean energy, renewable energy, we are also talking about green buildings. Sir, green buildings are a new concept. The green buildings are totally energy efficient buildings. Sir, I would request the Honorable Environment Minister to see that these green buildings are a very, very wonderful idea, but do we have those select, specific, skilled architects
designers who would look into this novice concept of green buildings, energy efficient buildings? Do we have that kind of education department where we can train them to see that we have these green buildings? Sir, it is very easy to speak about all these subjects. They look very good, but unless and until we have that wherewithal, we cannot meet those targets, sir. 2070 is a long time. We may reach there. But if we do not reach there, where have we failed is the question, sir. So, sir, finally coming to the point that when we talk about negotiations or we talk about COP26, COP27, there will be another COP28. But industrialized world, which has emitted emissions for so many centuries now, because they were industrialized first, we came later on the industrial scene. So do we pay right now, or do we continue with our fossil fuels by seeing that we phase them out, we control the use of these fossil fuels, but how do we do it is going to be the burning question, sir, when we talk about this. Sir, India has promised a few important points at COP27 about global warming, and at the negotiations that we will definitely go to net zero. We'll indulge into clean energy mechanism. We will switch to renewable energy by way of transition, and this all will require a lot of investments. Sir, making promises is very easy, but to fulfill them and to look at the budgets which have fallen from almost some halfway mark, we are unable to do that. The last point, sir, we need a forest cover. We had the National Forest Act by a couple of decades back. The target was to bring it up to about 27%, 31%. But we have not even reached the halfway mark. I know the Honorable Environment Minister will definitely not agree with me, but the data that is shown also covers tea gardens. When we show the forest cover, we show the trees on the roads. That is not the forest cover, sir. The forest cover has to be 31%. You cannot allow deforestation and have construction sites. You cannot have construction at the cost of urbanization, at the cost of a forest cover. So, sir, these acts need to be implemented very strictly. Now, if we put all this together, sir, whether it's a renewable energy, whether you take transition to energy, pure energy, or you take net zero, or you take agriculture crop patterns, because rice paddy fields, another kind of a crop, and that gives out methane, and you also take the shift to renewable energy. Sir, all this requires a holistic approach. You need to bring all these policies together. Unless and until we do not bring the coordinated effort to bring all these agencies together, to have an approach to see that we bring down to zero, net zero, this will not fructify, sir. And the last and very important point, I've always been harping on waste management, sir. Today, we all are flying all the times by air. And if anyone is looking at the tickets, they might see that what are the carbon emissions that are mentioned on the tickets. So the developed world has already gone on that level. The ticket mentions carbon emissions. So that is where we have reached. And here, we are unable to see that the waste management is done efficiently. Sir, if you see by traveling on the road, we'll see solar roofs everywhere. And on the other hand, if you see, then there are dungs and dungs, whole heaps of garbage which are not cleared. Sir, they somehow, somewhere contribute to bringing out these emissions which are not required. So, sir, these two aspects also, I think, would be a nail on the whole, the number of reasons I've given. And these reasons I need to take together in order to see that we curb the global warming that is affecting all of us. It is the duty of all the countries. But we have a little more duty because speaker is there. We have committed certain commitments, and we need to work towards it. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Amit Yagnik ji. The message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 15th December 2022 adopted a motion recommending to the Rajya Sabha
that Rajya Sabha do agree to elect one member from amongst the members of the Rajya Sabha to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Shri Vishambar Prasad Nishad, retired from Rajya Sabha, and do communicate to the Lok Sabha the name of the member so elected to the committee. Thank you. Honorable Jawahar Sarkar ji. Thank you very much for giving me this opportunity, and through you I thank the Minister for being present to listen to our vote. This is a subject that affects all of us, but where the state of West Bengal is concerned, there were many other issues also we would have liked to raise. We have been raising, like the federal structure, like Northeast, including Meghalaya, unemployment, price rise, central agencies being misused, and the border issues with China. But since you have given me this chance of speaking on this, I will. Please, let me speak. Please. बात तो करने दीजिए. Please. Honorable, please. No commentary. Honorable Jawahar Sarkar ji, please speak. पार्टी के खिलाफ बात करेंगे. Please. अच्छा, the special issue of climate change affects the coastal states of India the most. As you know, the immediate effect is the rise in sea levels. One of the most immediate effects is the rise in sea levels, and we have been hearing of projections of apocalypse for the last 20 years, 25 years. And the way we are proceeding, much of it might come to be true. We see the effects of it in the Sundarbans. The Sundarban is a very special area, which is the world's most, apart from being a World Environmental Site, a World Heritage Site, it is one of the great examples of how nature controls the sea. And that Sundarban today is gravely threatened by the dissipations of the ocean, which is again caused by climate change. At periodic intervals, the Bay of Bengal is subjected to cyclones of a type that only two other zones in the world receive: the Gulf of Mexico and the US coast, and the Philippines. We are ravaged, and that means today Tamil Nadu has been ravaged, tomorrow Andhra will be ravaged, Odisha has been ravaged, and the Bay of Bengal, Bengal and Bangladesh pull the cyclone like a magnet. But nevertheless, what stops us, what stops the sea from invading Bengal is the mangrove plantations that we have. And on the mangrove plantation, we do not find the seriousness we require. 10, 11 years ago, we had Alia that left behind a super cyclone. Until today, we have not received payment for them. We have pleaded again and again throughout this year that we need to replant mangrove plantation saplings. We need to grow that mangrove forest more. No reply. The rural development schemes that are the minimum that we expected did not come through. After that, sir, I would like to draw your attention to the deadly impact on crops. Sir, this one will be common to you, to me, and to all of us. You know what happened with this super heat this year, from the middle of April. The wheat crop got parched, shriveled up, and the procurement has been about 5% less. Wheat at 5% less than last year, I think it's about 4.5% less than last year, I raised this issue again and again, is a very dangerous symbol. After that followed, the heat wave was followed by delayed monsoons. West Bengal is a victim of this delayed monsoon like many other states. But what happens in a delayed monsoon for the paddy crop is that you are unable to cultivate it at the time that nature has given, and you are forced to contract your cultivation period from a good 120-day crop to an 80-day crop, to an 85-day crop, and productivity comes down. This is all an effect of the climate change, and we better realize that we are all contributing to it. That's the worst part of it. We can't blame the elements of nature all the time. Our food stocks, I had mentioned to the Honorable Food Minister,
and he told us quite emphatically that it is very satisfactory. I have reasons to believe that's not as satisfactory because the procurement of Kharif and the yield of Rabi is sensitive enough to worry. Sensitive. This is a national problem, so we need not score points on each other. The World Bank report that has come out, one of the World Bank reports that have come out, which is the Honourable Minister, I'm sure, knows about it, climate investment opportunities, etc., paints a picture that is very, very dangerous. New Delhi had 46 degrees, 47 degrees in April, which was unprecedented. We have gone through extraordinary spikes in temperature, but the World Bank predicts that this is only child's play. This is only child's play. Through the G20 Climate Risk Atlas, they have said that heat waves across India were likely to last 25 times longer by 36. Many of us hope to live till 36. So by 36, by 36, not me, I mean, I'm not talking about myself, I'm talking Imran. So we were likely to last for 25 times more. I would beseech to the Minister that even if half the figure is true, it's given by the JT climate report, half the report is true, what are we doing about it? Carbon emissions remain extremely high, and the IPCC's worst-case scenario puts India at one of the highest risk countries. We know all about it. We know all about it. Up to 75% of our workforce, which is 380 million people, are exposed to what we call heat-exposed labor. My friend Ami Yagnik just spoke about it. This heat-exposed labor. Now, the point is, India has also the additional disadvantage of being, disadvantage from this point of view, from generating one of the highest humidities in the world, being a tropical climate. So it makes us worse than many others. The bottom line is that they say that about 5% of India's GDP is at risk. Will somebody please clarify, is 5% of India's GDP at risk? We talk of 6% and 7% and quarrel for 7 months, whether it be 7% or 7.1%. Please on the but 5% अगर आ जाए इसके बीच में तो कहाँ रह गए? 2%. तो इसके बारे में बात करनी चाहिए. So we need to understand that we have to go through certain cold chain facilities, and the cold chain facilities hardly cover 5%. But without these cold chain facilities, our pharmaceuticals and vaccines would be destroyed. Many of our high-value crops would be destroyed. And one disruption, thanks to a heat wave, means a perishment. What are the figures? 20% we have lost. They said that in COVID-19, India lost approximately 20% of temperature-sensitive medical products, and 25% of the vaccines were destroyed due to broken cold chains. So these are, we need, I am putting forward this picture, it's known very well by the Minister, but the response is what we see. Now I'm coming to the, that part of it. There are these reports about how this year's heat wave has affected. Only the first 9 months we have lost 2,775 lives. We have affected 1.8 million hectares of crop area. More than 4 lakh houses have been affected. But chaliye, India recorded extreme weather events for 241 days out of 273 days this year. We are not talking of tomorrow or day after. We are talking of this year. We have gone through extreme weather events for 241 out of 273 days, out of which Madhya Pradesh went through the worst, Himachal and Assam followed. Now this is what we are going through. But more than this, the cause of alarm that we have on this side of the house is that there is a dualism in the government. I can't use the word hypocrisy, it may be a little too hard. There's a dualism in government policy that while there is an energy for development,
while there are certain energies even for environment, which I don't deny, there are at the same time events like 130 square kilometers of the most ecologically fragile region of the Great Nicobar Islands being put to slaughter. And no one is bothered about it. So we have these what I call the erratic movements. You are doing something about the environment here. I must say the minister has done an excellent job in Sharm el-Sheikh by getting the Western countries at least to agree to India's proposal. I say they go good about it. But at the same time, his ministry is giving licenses, his ministry is permitting the slaughter of forest land. The most ecologically fragile Himalayas are being put in under some sort of tourism. So these, you cannot have a dualism. You cannot use your left hand and right hand to negate each other. That is what's going on. If we make a list of the number of deviations that this ministry has made in the last 5-7 years on the issue of environment, that would call for a special discussion, and I would thank you, Jawahar Sarkar. Sir, to conclude, I would just please, say, you have already taken 2 minutes more. Use please, 2 more please minutes. conclude. Please sir, conclude. These are I've mentioned a lot of doom figures, but I'd say that fossil fuels that are the root cause of it are just about 170 years old. Much of the developed world used it 170 years ago, 150 years ago, and we in the underdeveloped part of the world at that point of time used it for 100 years. It is not the end of infinity. We are inviting the next ice age. The last ice age came about 11,700 years, and we are hastening the process towards the next ice age. That's the least I can say. But I am glad that at least in Sharm Sheikh COP 27, you could come to a common I'm calling other speaker now. Please. And I would submit, sir, that special fiscal measures be introduced if you want to build up the fund. Special taxation measures. Thank you, Mr. Sanjay Singh. माननीय संजय सिंह. धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में मुझे भाग लेने का मौका दिया. मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बापू ने कहा था कि इस प्रकृति के पास हर इंसान को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं. विकास की अंधी दौड़, पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी के नाम पर ग्रीन गैस का उत्सर्जन आज बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रहा है मान्यवर. और इसके भुक्तभोगी सिर्फ भारत देश ही नहीं है, यूरोप के देश, अमेरिका, दुनिया के तमाम अपने आप को कहने वाले विकसित देश, वो भी इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पीड़ित देश है मान्यवर. वो नजरअंदाज कर रहे हैं. वो इन समस्याओं को बार बार समझौता करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं. पूरी दुनिया में ग्रीन गैस उत्सर्जन के मामले में भारत की भागीदारी तो मात्र 3% है, लेकिन अमेरिका जैसे देश, दुनिया के तथाकथित विकसित देश, वो इस पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए बड़े तौर पे जिम्मेदार है. और इसको लेकर समय समय पे जिनोवा में एक समझौता हुआ जिसका पालन खुद ये विकसित देश नहीं करते. जो टेक्नोलॉजी हमको सस्ते दामों में उपलब्ध करानी चाहिए उस समझौते के मुताबिक हमें नहीं उपलब्ध कराते, और जिसके कारण से तमाम प्राकृतिक आपदाएं हमने झेली मान्यवर. प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण एक नहीं अनेक घटनाओं के हम गवाह बने. हमने भुज का भूकंप देखा मान्यवर, हमने तमिलनाडु की सुनामी देखी मान्यवर, हमने उत्तराखंड की आपदा देखी मान्यवर, हमने जम्मू कश्मीर की आपदा देखी, हमने उड़ीसा के तूफान देखे, हमने असम के बाढ़ देखे, हमने बिहार के बाढ़ देखे, हमने कई क्षेत्रों में सूखा देखा मान्यवर. और ये सब कुछ प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण.
प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा जिसके कारण ये प्राकृतिक आपदाएं हुई। लेकिन इसका समाधान समय समय पे हमारे नेताओं ने दिया। मान्यवर, मुझे याद है मैं अपने नेता आदरणीय रघु ठाकुर जी के साथ एक मुहिम उस समय देश के अंदर चली थी जिसका हिस्सा बना था, जब स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को लेकर अटल जी ने एक पहल की थी, नदी जोड़ो योजना की पहल। मान्यवर, अरे बहुत ही सार्थक पहल थी, बहुत ही अच्छी पहल थी। पूरे देश की नदियों को जोड़ने की योजना, वो योजना किस ठंडे बस्ते में चली गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक योजना ऐसी योजना थी, नदी जोड़ो योजना मान्यवर, जिससे हम सूखे से भी बच सकते थे, बाढ़ से भी बच सकते थे, तमाम आपदाओं से बच सकते थे। आज सूखा और बाढ़ उसी प्रकार से हम लोगों के लिए हो गया है मान्यवर, जैसे गांव में किसी की गाय मरती है तो किसान दुखी होता है, रोता है, लेकिन गिद्ध खुश होता है, गिद्ध खुश होता है। इसी प्रकार से बाढ़ और आपदाएं, बाढ़ और सूखा हो गई इस देश के अंदर। सत्ता के लोग, चंद अधिकारी, बाढ़ के नाम पर उनका उद्योग चल रहा है, सूखा के नाम पर उनका उद्योग चल रहा है। इन समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए कोई पहल नहीं की जाती। और कुछ आंकड़े हैं जो आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा मान्यवर, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 2016 से 2021 के बीच में भारत के अंदर जो चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन की घटनाएं हुई, उसके कारण 3.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के फसलों का नुकसान हुआ। जलवायु परिवर्तन के चलते 20 साल में प्राकृतिक आपदाओं में 79.5 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। क्लाइमेट इंडिया 2022 की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि भारत ने वर्ष 2022 में पहले 9 महीनों में 273 दिनों में से 241 दिनों में किसी न किसी देश के हिस्से में चरम मौसम बिगड़ने की घटनाओं को देखा है। यह 88% इसमें वृद्धि हुई है। 18 लाख हेक्टेयर फसल का क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है, बर्बाद हुआ है। ये कुछ और आंकड़े मान्यवर, 2022 में जो घटनाएं पूरे देश के अंदर हुई हैं उसका उल्लेख इसमें किया गया है। 1956 के बाद अक्टूबर 2022 में भारत में सबसे अधिक वर्षा हुई। 1901 के बाद भारत का 8वां सबसे गर्म सितंबर 2022 का रहा। 11वां सबसे गर्म अगस्त 2022 का रहा। 121 वर्ष के बाद सबसे गर्म जुलाई 2022 की रही। तीसरा सबसे गर्म अप्रैल 2022 का रहा और अब तक का सबसे गर्म मार्च हम लोगों ने देखा। मान्यवर, 2018 से 20 के बीच की एक रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई जिसमें यह बताया गया कि 3 साल के अंदर बाढ़ के कारण 59,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान देश को हुआ। इस आंकड़े में फसलों, घरों, सार्वजनिक संपत्तियों की तमाम क्षति जो हुई उसका आकलन करके बताया गया और यह लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट है कि 59,000 करोड़ का नुकसान हमको झेलना पड़ा। मानव, कितना समय है? आप 1-2 मिनट और बोल लीजिए। मान्यवर, अरे आज तो आप लोगों के तमाम सही बातें सुझाव दे रहा हूं, बोलिए आप। मान्यवर, इस साल असम के कुल 35 में से 32 जिले बाढ़ की चपेट में रहे। बिहार की 76% आबादी बाढ़ के प्रभावित खतरे में रहती है और 16.5% क्षेत्र बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा। 19 जिलों में लगभग बाढ़ आती है। इसके अलावा मान्यवर, मराठवाड़ा के इलाके में मूसलाधार बारिश हुई जुलाई में। 83 लोगों ने, जिसके कारण से जो संपत्ति का नुकसान हुआ, एक आंकड़ा आया कि 83 लोगों ने उसमें आत्महत्याएं की। राजस्थान में 70 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा हुई। गुजरात के अंदर 14 जिलों में 8 लाख किसानों को 2022 में मानसून की बारिश के कारण फसलों का जो मुआवजा सरकार को देना पड़ा 630 करोड़ रुपए का।
तो ये कुछ ऐसे आंकड़े बेंगलोर में, सर बेंगलोर जो 900 मीटर ऊंचाई के स्तर पे स्थित है, उस शहर को बिल्कुल डूबा हुआ हम लोगों ने देखा। ऐसी घटनाएं मुंबई में भी देखने को मिलती हैं। तो तमाम रिपोर्ट के जरिए बताई गई जो आंकड़े हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। और भारत की सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ता है उसका भी अगर आंकड़ा देखेंगे मंत्री जी, तो 2020 में केंद्र सरकार ने जो राज्यों को आपदा राहत कोष में पैसा दिया है वो दिया है 8,068 करोड़ रुपए। जो डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा दिया गया है वो दिया गया है 17,747 करोड़ रुपए। तो ये तमाम राहत के बड़े बड़े पैकेज, हजारों करोड़ रुपए आपको आपदा राहत के नाम पे समय समय पर राज्य सरकारों को देना पड़ता है। इसका स्थायी समाधान निकालने का प्रयास, जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर लोहिया के सपने में भी था और अटल जी ने भी उस पर पहल की कि देश भर की नदियों को जोड़ो जिससे सूखा और बाढ़ की समस्याओं का अस्थायी समाधान निकल सके। इसके अलावा सर, बस अंतिम खत्म कर रहा हूं, सबको 10-10, 12-12 मिनट अंतिम खत्म कर रहा हूं। इसके अलावा सर, एक पराली की समस्या का जिक्र बार बार होता है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, हर साल 1 महीने तक टीवी चैनल्स पे, सदन के अंदर, बाहर, हर जगह एक ही चर्चा होती है। किसानों की पराली के कारण प्रदूषण खराब हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। सच्चाई ये नहीं मान्यवर। एक रिपोर्ट आई कि मात्र 6% पराली जलाने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, मात्र 6%। 94% अलग सोर्स और कारणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। खत्म कर रहा हूं 94% अलग सोर्स से होता है। लेकिन किसानों को दंडित करना इसका समाधान नहीं है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक पत्र लिखा मंत्री जी को कि अगर प्रति एकड़ 2,500 रुपए सहायता राशि हम किसानों को देने की योजना बनाएं, 500 रुपए पंजाब, 500 रुपए दिल्ली और 1,500 रुपए केंद्र सरकार अगर सहायता दे तो शायद वो अपनी पराली जलाए नहीं, उसका एक समाधान निकल सकता है। पराली जलाने की समस्या जो हर साल हमको झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, उसका भी समाधान हम लोग पा सकते हैं। अंत में मानवर, इन्हीं लाइनों के साथ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हमको सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नमामि गंगे मिशन पर जिस प्रकार से लखनऊ के, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है मान्यवर, वो बहुत चिंताजनक है। और उन्होंने कहा है कि नमामि गंगे योजना में खर्च की जाने वाली रकम आंख में झोंकने का कार्य है। इसके ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir. Sir, the gravity of the topic is evident from the concern expressed by the previous speakers. But history itself is replete with incidents where climate change and global warming have completely finished civilizations. History is a spectator to the fact that the entire Mayan civilization, it died because of the depletion of the aquifer which was sustaining that particular civilization. So there is no denying the fact that global warming arising out of climate change has impacts on civilizations at a civilizational level, not just at the city level or at a country level. So we have seen the picture of the Aral Sea, which completely got desertified, of a ship, you would have seen it on television, of a ship which was there and there were no human beings there. Now, if you really allow the climate change to affect our lives unhindered, we will have the entire world houses where no human beings will be there. Now, that is the impact of a global warming scenario all over the world. There are instances which people have mentioned of how it affects agriculture, how it affects irrigation, industry, health, education, skill. I don't want to talk about this because this has been dealt with at length. I may not have the time.
But what I want to say is that even economists, development economists who believe in economic growth alone, like Stiglitz, I've spoken about him in this parliament, they have said that currently the three existential crises in this world are inequity, climate change, and form of democracy. Democracy in the form of, institutions of freedom of expression and many other things. But climate change climate change has been specified by him as one of the most important factors of existential crisis, simply because of the fact that economists don't account for it. Economic model, factors of production do not take into account climate-related impacts. And therefore, even economists have expressed concern now that the economic growth model has to change. I do not want to get into more theory, but what I want to say is the fact that extreme weather events leading to global warming and many such things has resulted in a very important comment from the climate investment opportunities in India's cooling sector. I must make one thing very important. Despite all the action that we take in India towards changing or towards having a green pathway to growth, the climate change impact world over will continue to impact India. And therefore, India is destined to become a heat trap. And therefore, the biggest problem that would come before the countries which will be affected by climate change, and which is least discussed, since Honorable Minister is there, I would really want to harp on this, is migration, human migration. The modeling done by IPCC, modeling done by University of Chicago, and modeling even domestically have proved that India's heat trap will make it unbearable for people to go to the labor market, to go for factors of production, to go for agriculture. When the labor market itself gets vitiated, it impacts poverty, it impacts agriculture, it impacts every other sector. Sir, the impact of this particular change, human migration, would be affecting not just people within the country, it will impact countries around India. You may see people from Bangladesh coming into India because the sea level over there has risen. You may see people from one state coming to another state. And the climate modeling has also revealed that the global north will become warmer, and the global south, like India, will become extremely hot and so unbearable that the report says that possibly become one of the first, India will become one of the first countries to experience heat waves with temperatures exceeding human survivability limit. They can't survive. So they will have to migrate. And if they do migrate, you imagine the situation of food security in that country, or food security in the new region, energy security in the new region. A humongous proportion, calamity of catastrophic proportions will hit that particular area, and not just India, it will happen all over the world. And since we are giving a direction, we are taking the leadership for a greenway path, it is all the very good, but we have to be prepared to face the consequences of others not doing it, or others having committed historical negligence in allowing green emissions to rise and rise and rise in their quest for economic development. And therefore, I thought I will take this opportunity, since very few minutes are left, to not talk about the impact, really, but to talk more about what are the pathways and suggest what are the things that probably we should still be doing, which we are not doing, keeping in view the fact that we will still face the trauma even if we are doing everything well. So the first thing is we have to move from security to resilience. Food security, energy security, health security would be important, but we have to think about resilience of that system. You may have all the security, but it may not be resilient. When the impact of a heat wave comes, the entire security collapses. So resilience will be the new buzzword. Second, we have to move from mitigation to adaptability. To face those consequences, how do we have to change our life will be something which I'll come to. That is lifestyle changes. But even at a national level, we have to think about changes.
We have to move from relief to preparedness. We have to move from local thinking to global thinking, which we are currently doing. We have to look for not only green pathways inside our country, we have to help countries have a green pathway around us also. That is in the SAARC countries, in South Asian countries. We take leadership in that, and G20 provides us that particular platform. We have to move from government to private and citizens. And the life is one such pronouncement which makes it important for all citizens to change their lifestyles, to be adaptable, to be resilient, to face this challenge when it comes over them. I think since the Honorable Minister is there, the House is there, we have to suggest for the private sector, and this I'm making a very concrete suggestion, that the companies law should be amended to change the corporate social responsibility provision to ESG provision. That would include environment, social, and governance. Corporate social responsibility currently includes everything. The private sector needs to have a responsibility in this because everyone is affected. Their own value chains, their own productivity will be affected. We also have to think about modeling and research. So I'll take 2 minutes. Modeling and research. We have to improve our modeling and research. Our ability, Odisha's ability, for example, to handle the disasters has been, one of the factors responsible for it has been better modeling of the movement of air. The climate modeling impacts, the scenarios have to be worked out. Now, I will come to some of the remedial measures. The most important thing we have to do, Honorable Minister is here, is to change, we have a relook at the Disaster Management Act. The Disaster Management Act 2005 has not been revisited. When the pandemic came, we looked around, we looked at the Disaster Management Act, then we looked around the Pandemic Act, which was very old, and therefore we reviewed it and brought a new Pandemic Act. This will be required in every sector. This will be required in agriculture, industry, health, education, every sector. And therefore, I think the Disaster Management Act, since it is governing all other departments, including the states, please revisit it and factor in all other departments' requirements to have built this resilience, not just security. And we must also realize that many of these climate changes are irreversible disasters. They are not cyclones, they'll go away, floods, they will finish. They are irreversible. Therefore, the DM Act has to be looked at because that provides guidance. Second, I think another last point, sir. Every country currently has a scenario planning cell at the Prime Minister's office level. What would happen in different scenarios? What would happen if human migration, if 2 million people start coming to West Bengal or 3 million people go from Pakistan, they come to, let's say, Haryana, Rajasthan. So this scenario planning has to be having the top level commitment. So Prime Minister's office should have a scenario planning cell. It is there in US, UK, Singapore, everywhere it is there. I have been a student in those universities to know that it exists. We should have the same thing at the state level, at the Chief Minister's office level. And lastly, what Odisha has done under Chief Minister Naveen Patnaik's leadership is a small step, but I think it's a giant signal, and that is you need to have climate atlas for every state, climate budget for every state. Then only you will be prepared to face the disaster in all the departments that will face. The last point, sir. Thank you, Dr. Patnaik. Your time is the last point, sir, is in all these matters in climate impact, you would realize that the poor are disproportionately affected and disproportionately impacted. So inequity keeps on increasing, and that is the first existential crisis that Professor Stiglitz was speaking about. So climate change will lead to inequity. So two existential crises will automatically come in. So we have to address all these things during this discussion on global warming. Thank you so much, sir. Thank you. Honorable members, I have a request from Dr. Sudhanshu Trivedi. He has an emergency, he has to go. So if you agree, I can call Sri Sudhanshu Trivedi. माननीय उपसभापति महोदय,
आज हम जिस विषय के ऊपर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, ये विश्व की उन समस्याओं में से एक है जिसमें कोई भी देश और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इससे अप्रभावित हूं। अनेक समस्याएं हो सकती हैं, कोई कह सकता है किसी देश पे आतंकवाद का प्रभाव नहीं है, कोई कह सकता है अमुक समस्या मेरी नहीं है, परंतु क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है जिससे विश्व का हर देश और हर व्यक्ति एक समान रूप से प्रभावित है। और इसकी वजह से अगर हम एक बात कहें कि विगत 100 वर्षों में दुनिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति की, किसी जमाने में सिर्फ मार्कोनी का सिग्नल गया था, 1900 में पार आज हम वर्ल्ड वाइड वेब पे बैठे हुए हैं, हम सैटेलाइट्स पे बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो गया, क्वांटम रेवोल्यूशन हो गया। कहा जाता है कि वी आर एट द कस्प ऑफ ए ग्लोरियस एज इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। परंतु दूसरी तरफ विगत 100 वर्षों में टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है और 5 सबसे गर्म वर्ष पिछले 30-35 वर्षों में रिकॉर्ड किए गए हैं। और इस प्रकार की आशंका है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगले 100-150 वर्षों में हो सकता है कि मनुष्य जाति के एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाए। It never happened in the documented history of the mankind. So we have to decide whether we are at the cusp of a glorious time or at the cusp of a precarious time. हम एक शानदार स्थिति की तरफ हैं या एक खौफनाक स्थिति की तरफ हैं। और इसी पर विचार करने के लिए दुनिया ने सबसे पहले, आप सबको याद होगा, 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुई, फिर 1997 में क्वेटो, जो क्वेटो प्रोटोकॉल हम सब जानते हैं, 2009 में कोपेनहेगन हुआ, 2015 में COP21 पेरिस में, और अभी हाल के वर्षों में ग्लासगो, और अभी पिछले महीने ही कुछ दिन पूर्व ही माननीय मंत्री महोदय शर्म अल शेख में जो कार्य करके आए हैं, ये दर्शा रहा है कि पूरी दुनिया और भारत इस विषय को लेकर कितनी गंभीरता के साथ सजग है। परंतु जब हम विचार करते हैं कि समस्या इतनी बड़ी है तो उस पर विचार भी उतना गहन होना चाहिए। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब पेरिस में जलवायु का सम्मेलन हो रहा था, पूरी दुनिया के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ता से स्टैंड लिया था। तमाम हमारे ऊपर आक्षेप लगे थे कि हम अलग थलग पड़ सकते हैं, परंतु पर्यावरण संतुलन के लिए विकसित देशों के ऊपर एक प्रभावी दबाव बनाने का कार्य भारत सरकार ने किया था। और मैं उसी नवंबर 2015 में मोदी जी का एक वक्तव्य उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, पीपुल एंड प्लैनेट आर इनसेपरेबल एंड ह्यूमन वेलबीइंग एंड द नेचर आर इंडिविजिबल। यानी हम नेचर से अपने को अलग रख के नहीं देख सकते। और आप सोचिए कि आज विज्ञान ने भी बात माना। सिर्फ 60-70 साल पहले अगर आप किसी से कहते कि दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है, तो कोई कहता कितने अनसाइंटिफिक हो, कितनी बेकार की बात कर रहे हो, हीट कंडक्शन के रूल नहीं जानते, कुछ मीटर हीट नहीं जा सकती, हजारों किलोमीटर कैसे जा सकती है। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ने प्रूव किया है कि नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ भी पिघल सकती है, बिकॉज एंटायर अर्थ इज ए सिंगल कॉस्मिक यूनिट। ये वही बात है जो मोदी जी ने कहा कि नेचर और ह्यूमन वेल बीइंग अलग नहीं हो सकती। अब आप देखिए कि जब से हमारी सरकार आई तो इस दिशा में छोटे स्टेप से लेकर क्रमशः उत्तरोत्तर बड़े स्टेप तक किस प्रकार का कार्य हुआ। याद करिए 15 अगस्त 2014 सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन दिया था तो स्वच्छ भारत अभियान की बात कही थी, यह शुरुआत थी। याद करिए नो सिंगल यूज प्लास्टिक, यह अगला स्टेप था। नमामि गंगे, जब नमामि गंगे की बात हुई तो गंगा को पूरी तरीके से क्लीन करना, यह अगले स्टेप की तरफ था। और इतना ही नहीं, जो हमने लक्ष्य 2015 में निर्धारित किए थे उसके लिए भारत सरकार ने ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, जिसमें कि वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्किल किया जा सके कि वो किस प्रकार से अपनी वन संपदा का वास्तविक संरक्षण कर सकते हैं, जिससे कि जो हमने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पेरिस में तय किया था उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। और अगला लक्ष्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, अर्थात एक ऐसा विकास का मॉडल इसमें प्रकृति के साथ हम तारतम्य बनाकर विकास कर सकें। और इसी के लिए नेशनल बायोडायवर्सिटी टारगेट भी तय किया गया, यानी एक बहुआयामी योजना के साथ इस क्लाइमेट चेंज या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए आगे बढ़े। इतना ही नहीं, जब हम भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता भी है, और अगर हम फॉसिल फ्यूल या कोल से ही ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करते रहेंगे तो कैसी समस्याएं आ सकती थी। तो याद करिए एलईडी बल्ब का विषय बहुत शुरू में लिया गया और अब तक भारत सरकार 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स का वितरण कर चुकी, जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं सभापति महोदय जो पूर्ववर्ती सरकारों ने भी सोचा होगा, नहीं कर पाए होंगे। जैसे सोलर एनर्जी में जितनी लंबी छलांग हमने मारी है, उन्होंने भी सोचा होगा, उतनी लंबी छलांग नहीं मार पाए।
परंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उन्होंने शायद सोची भी ना हो। वो ये था कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा। यह विचार शायद उन्होंने नहीं किया होगा। मोदी जी के नेतृत्व में यह हुआ और आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र गुरुग्राम में है। और इसमें हमने अचीव क्या किया है कि इन वर्षों में हम सोलर सेल की कैपेसिटी में तीसरे नंबर के देश हो गए हैं और सौर ऊर्जा के द्वारा वाटर हीटिंग के प्रोसेस में दूसरे नंबर के देश हो गए हैं। और इतना ही नहीं, अभी भारत ने दुनिया में पहला ऐसा गांव बनाया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा पे चलता है, जहां की एक एक घर भी सौर ऊर्जा पे चल रहा है। वो है गुजरात का मोढेरा गांव। और इतना ही नहीं, वहां पर भगवान सूर्य का एक मंदिर भी है। तो वो भावी भारत का भी प्रतीक है और गौरवशाली भारत का भी प्रतीक है। अर्बन फॉरेस्टेशन के लिए नागपुर, रांची और पणजी में फॉरेस्टेशन किया गया और रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 80% तक ब्रॉड गेज का पूरा कर लिया गया है 52,000 किलोमीटर के द्वारा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था इस क्लाइमेट चेंज में। अब जैसा हमारी पूर्ववर्ती वक्ता ने भी बताया, उसके मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि COP26 में ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत की बात कही थी कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी, 50% रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन एमिशन 1 बिलियन से कम करना और कार्बन इंटेंसिटी को 45% डाउन करना, नेट जीरो बाय 270। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है सभापति जी, कहा जाए वो किया भी जाए। 2015 में हमने लक्ष्य तय किया था कि 2030 तक हमारी नॉन फॉसिल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 40% हो जानी चाहिए। और मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि 2022 आते आते 39.91% हो गई है, अर्थात 8 वर्ष पूर्व हमने उस टारगेट को अचीव कर लिया। फिर यदि आप ध्यान करें, जिसका अभी उल्लेख किया गया कि COP26 ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने कॉन्सेप्ट दिया लाइफ फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, यानी एक ऐसा जीवन शैली जो कि इन्वायरमेंट के अनुसार हो। यहां पे मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से मूलभूत विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह नेचर की समस्या क्यों आती है? हम सब में शायद कुछ ने जरूर पढ़ा होगा, वेस्टर्न थियोलॉजी में नेचर नाम की किताब है रिटन बाय एरिस्टोटल, जिसमें क्या लिखते हैं वो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। सब कुछ प्रकृति हमारी सेवा के लिए। और यही नहीं, उस फिलॉसफी में यह भी लिखा गया, मैन शुड बिकम द पोजेसर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर, चाहे फ्रांसिस बेकन या रेने डिकार्टे लिखते हो। इतना ही नहीं, यह लिखा गया, मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर। और इसीलिए बढ़ते बढ़ते हम उस मुकाम तक पहुंचे थे। हम लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, हमारी किताबों में हमने पढ़ा, जब यूरी गैगरिन स्पेस में गए तो क्या लिखा था किताबों में, मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, एज इफ स्पेस इज एन एनिमी नीडेड टू बी कॉन्कर्ड। इस विचार ने प्रकृति के दोहन को इस सीमा तक पहुंचाया है कि जिसका आग्रह प्रधानमंत्री जी ने किया था कि हमें नेचर के अनुरूप जीवन जीना होगा। तो मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भारतीय परंपरा में, गांव में हम जो जीवन जीते हैं, नेचर के साथ उसका कैसा तादात्म्य है, यदि हमें समझ लें तो हमें शायद बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं हो। गेहूं की बाली उगती है तो उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो किसको जाता है? पहले पशुओं को जाता है। जो बाली निकाली जाती है दाने, तो पहला दाना किसको जाता है? पक्षियों को जाता है। जब दाने से आटा बनता है तो पहला आटा किसको जाता है? चींटियों को जाता है। फिर गूंथा जाता है आटा रोटी बनाने के लिए तो मछली को जाता है। पहली रोटी गाय को जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते को जाती है। इससे ज्यादा प्रकृति के साथ रहने का तरीका किसी को सीखने की जरूरत है। पर दुख की बात यह थी कि हमारे किसान भाई भी जब आंदोलन में बैठे थे तो कोई विदेश की लड़की उनको बता रही थी कि इन्वायरमेंट के साथ कैसे जीना चाहिए, जबकि वो तो हम हजारों सालों से किस तरीके से जीते आ रहे हैं वह हमें समझ में आना चाहिए। और मैं एक कोट करना चाहता हूं, इस सारी समस्या का मूलभूत कारण कहां से आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़े कवि हुए अंग्रेजी के, जिन्होंने एक फ्रेज यूज किया, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। उसका मीनिंग क्या था? कहा गया बच्चा प्रकृति के अधिक नजदीक होता है और वही हमारा फोर फादर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम अपने अंदर के चाइल्ड को देखें तो हमारे पूर्वजों ने यानी फोर फादर्स ने क्या कहा था वह हमें समझ में आना शुरू होता है। और हमारी सभ्यता तो वो है मान्यवर जहां पर की प्रार्थना भी क्या की जाती है? अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, रापः शांति, वनस्पति औषधि
फूल, पत्ती, अंतरिक्ष सभी का कल्याण हो। परंतु अफसोस की बात यह है कि जब हम इस प्रकार के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उस टकराहट के कारण वह समस्या हो रही है। इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने कहा कि लाइफ स्टाइल एनवायरनमेंट के अनुरूप होनी चाहिए, आज यदि यह सीख कहीं से आ सकती है तो भारत से ही आ सकती है, भारत की परंपरा से आ सकती है। और आज हम दुनिया में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गए हों, पर क्या हमने धरती और धरती की वेदना को देखा? तो यह मैं पंक्ति कहना चाहूंगा, आकाश नापने वालों तुम सच सच कह दो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन व्यथा? जो दोहन की प्यास से दुखी रक्त प्रकृति की करुण कथा, वो अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध, वसुध मतलब वसुधा का पुत्र यानी मनुष्य, वो अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध, पैरों के नीचे सिसक रही रसवती धरा। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर यह परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी आर द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड which can give an answer to lower down the temperature of the ecological climate and the cultural climate also, because this is embedded in our culture। और हमारी गवर्नमेंट ने आने के बाद उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर संपूर्ण विश्व को दिशा देने के लिए भारत की संसद में जो यह विचार हो रहा है, भारतीय संस्कृति के विचारों के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे तो एक नई दिशा समाज को देने में सफल होंगे। धन्यवाद। Dhanyavad. The next speaker is S. Niranjan Reddy. Thank you, sir. Sir, may I start my speech by expressing my gratitude to the chair for allowing a short-term discussion, short duration discussion on such an important topic. Sir, I would also like to compliment Mr. Tiruchi Shiva for provoking this particular discussion. Mr. Shiva is one of the elders in what is informally referred to as the House of Elders. So he's showing us some guidance. I thank him. I'm also complimentary of our minister, Mr. Bhupendra Yadav, who's here showing the seriousness that he bestows on this particular topic. It's also greatly comforting, sir, that we have such an efficient minister who is shepherding India through these difficult times, taking care of our environmental interests. I'm also satisfied, sir, that the winter session of this House started with discussions on two important environmental bills, Wildlife Protection Act and the Energy Conservation Act. Maybe the winter chill and the bad air that comes with it is possibly setting the stage for us to discuss these environmental issues. Sir, I represent the state of Andhra Pradesh, which is particularly vulnerable. Like India as a country itself is more vulnerable to global warming. Andhra Pradesh state, sir, has 975 kilometers of coastline, which is the second largest, and it is on the eastern coast, which is now believed to be at greater risk of global warming than the west coast. We also have three major cities, Visakhapatnam, Kakinada and Machilipatnam, which have been found to be the first of the cities that may be affected by global warming. It is also a largely farming state, sir, and one of the perils of global warming has been the alteration in food crop patterns, the reduction in the crop growth output. So these are matters of great concern for the state as it is for the country. Sir, I would also like to bring to your notice and to the House's notice, my friend Mr. Amar Patnaik had already mentioned, there was a recent report which mentioned that India is particularly susceptible to any increase in temperature because the temperatures may cross the human tolerance level, and the poorer sections are the ones who are going to be most affected by it. The agricultural biodiversity is also going to be affected, and there is a possibility of a large-scale food crisis that may stare at India after 20 or 30 years because of the reduction of the food output. Sir, having mentioned the problems which have already been spoken to by the other members of the House, a few of the remedial steps that I wanted to suggest was possibly the government could look at having a disaster-resilient infrastructure. My friend Mr. Patnaik had spoken about moving to a resilience strategy and an adoption strategy.
one of the suggestions I had for the government was to have a disaster resilient infrastructure with special emphasis on global warming and abrupt flooding, because we have seen these as the immediate consequences of global warming. Sir, we could also look at an advanced warning mechanism which would help people. We could look at a disaster responsiveness program that is prepared for some time to come in the future. So there are also certain micro steps that could be looked at. While there are macro measures that need to be taken, there possibly would be, sir, a few micro steps that may need to be considered. Greece as a country, sir, has designated an officer known as a heat officer. The officer only looks at the aspects of global warming, advises the government on what steps need to be taken during the summer months when a lot of poor people would be subjected to the heat waves. Sir, we could look at having heat shelters, like we have some shelters during cyclone. When we see summer months that are approaching and we see that it's the poorer sections that are going to be most affected, a heat shelter that is prepared well in advance, which could deal with that the few heat days in particular regions when the heat waves cross, could be one of the suggestions I have. Sir, I have another suggestion. The world is moving towards a climate fund where the countries that are more advanced, that contribute more for economic pollution, pay towards this climate finance and climate fund, which is then used for mitigating or for improving situation in the lesser polluting countries. Sir, India as a country is equally diverse. Some states are much more developed. They have much more higher levels of industrialization. They have much more levels of revenue collection, tax collection. They are therefore much more richer, so to say, and they are also contributing more to the economic pollution and the warming within India. One of the ministers from the last speech when we spoke on energy conservation bill hearteningly told us that per capita contribution of India is only 1/3. While it is salutary and India would try to maintain that, I am only saying that if there has to be a climate fund or a climate amount that may have to be collected by the government for addressing these issues, possibly we could look at the world situation where the more polluting and the richer states contribute a little more so that the money could be then used for offsetting these effects in the other places. Sir, I would like to conclude by referring to one old native proverb which says that we don't inherit our earth from our ancestors, we only borrow it in trust from our children. Sir, we have only one planet, as one of the Honorable Ministers said, and I would think that the government is moving in the right direction, but this is an impending crisis that may need to be addressed a little more seriously and a little more urgently. Thank you, sir. Thank you. The next speaker is K. Keshav Rao. We are discussing this subject at a very appropriate time because the budget is right before you within 2 months. So whatever we are trying to tell you, they have been very strategic and they have been very valuable suggestions, but they would take time. But dealing with your own budget, asking for more money is something which is easier. So I would rather welcome this discussion on the eve of your budget. So whatever it is, climate is changing. I'm saying this because we are not indulging any politics now. If there is some shortcomings that we show you, it is not out of any apathy. What did you say? Any apathy. Do not take me amiss on that issue. It is true that the government of India has a big list of relief measures and things that you have said, including the new fund that you want to create for that. I would say Mr. Patnaik has very rightly said, after this scholastic speech of MAG about the scientific thing and Patnaik warning us, this climate change or what you call warming, climate warming
is something which is not only threatening our lives today, but very civilizational lives. I was going through yesterday, one book is 20 million years ago, the human race, how this dinosaurs came down, went into extinction because of the climate change. Now that is the threat that Mr. Patnaik has detailed out. I would rather say the two things. Rather than saying what exactly is going to be the impact and what exactly is it doing are known to all of us, except saying that it is not going to affect a particular age or particular period, not particular section, but the entire civilization as such, what I said. I would say what exactly we need to do. Shia was telling me that instead of saying what exactly is the statistics, please try to give some measure, some suggestions which are going to help us out. Patnaik ji has given us three sets, three things that are going to challenge you, that are scaring us. He says in the place of security, you must have resilience. In place of mitigation, you have adaptability. In place of relief, you have preparedness. In place of green pathways, lifestyle must be changed. This I would endorse and say that this should be the... Sir, the IPCC report finds that we are radically, unless we radically change our course now, we will be leading towards this end. India is ranked 4th among the list of countries most affected by climate changes in 2015. That is notwithstanding the fact that today only two-thirds of the emission is created by the 10 countries. We are absolutely matters somewhere at 3%. Yet we take the blame. What exactly they should give, the technologies that we expect from the developed countries, that is not forthcoming. That apart, we are not coming out with our own technologies, as Niranjan Reddy has rightly said. We must now think of the resilience development schemes which are going to stand by it. Now today, 1.2 degrees Celsius. Within another 20 years, we would be reaching 1.5, although you promised to fight them. Notwithstanding that 1.5 threat, today as it is, if you allow the things to go on, 60% of our population is going to be affected by this increase, which did not reach 1.5, but reach some disastrous level. Then I would rather say, but at the same time, when I'm suggesting this, we must also think where this emission comes in. 7% of emission is from the Indian side. This has to go down. As Amiji said, wastages or your own energy resources, your, let me say, what you call, the coal that you are using, the burning at Punjab, these things do add to the emission factor. These things are within your own things that you are making. But in case you allow things to go down, if you allow things to come, the Himalayan glaciers are a threat. If not today, tomorrow, the main rivers like Ganga, Indus, and Brahmaputra are mostly depend on snow caps and the snow water, glacial water. This makes them vulnerable to global warming. I'll not take because I am myself not doing well. So I'll take only 1 minute to say. Sir, recently we have seen in Chennai or in Kerala the floods. This is again effect of the climate warming. This to mitigate this, what we need is the laws, strict enforcement of laws. We don't have, today, for example, you take Uttarakhand, we could not allow the water to flow down because of the illegal constructions in between. So these things may look very relevant on the day when the disaster takes place.
But before that, we are never futuristic. We need to bring that kind of a lifestyle in them so that they become futuristic and understand why the government is trying to take this kind of a stringent actions. Another thing is, you have CSR today, corporate social responsibility. This must change into a regular law or regular funding source. Corporates must take up the schemes by themselves and do the job. Sir, coming nearer to Telangana, I can tell you like any other state, we are an agricultural state. Naturally, this climate warming is going to affect us, going to affect our economy. We are, on our part, we have taken up this scheme or the program that within another 5 years, 50% of our power will be solar, the renewable energy, not for fuel coal. So this is a big step that we are taking. Like this, every state must take responsibility to take up the programs which are going to help the center, going to help humanity and our own selves. Thank you very much, sir. Thank you. The next speaker is Sri A.D. Singh. Thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on this matter. As this is a menace which is going to harm every living creature on the earth, I would not dwell on the disasters or ill effects which have taken place. But this is one area where every Indian has to participate and give his contribution in his own way. And new innovative ideas have to be spelled out to the people. Other day I was in Mumbai. I went to Mazazan Dock shipyard, and I found that they have also made a boat which can carry 25 people in the inland waterways running on hydrogen. And the same boat can be used for transportation also. So such small things will definitely help in its own way to bring down the CO2 level. We have to, I will just suggest, because most of the colleagues have already spoken, so I will not dwell on many things. We have to try to reduce CO2 emission by 45% annually below 2005 level. Try to have 50% of power generation in the country on non-fossil fuel level, on non-fossil fuel. Raise additional carbon sinks. This means increasing green cover and forest cover. Improve water, wastewater and municipal waste management. This will reduce methane emission, which is 10 times worse than CO2. Blending of ethanol. So we should give incentive to the sugar industry that they should produce large quantities which can be mixed with petrol. Simple things like road management. The way all over India, every road is blocked half the day. So that is also contributing to emissions, and which is, we have to insensitize private sector to raise plantation in degraded land. Tidal energy, wind farms, geothermal energy farms, these should be taken care of. Solar energy should be put on the household of every individual wherever it is possible. So there are small measures which we take, I think definitely will help in our own little way in reducing the, in contributing our efforts towards loading of CO2. And as we go back several decades in the rural India, there were so many water bodies, so the need of irrigation was much less than today. We have covered all the water bodies and made them land. So those water bodies also have to be revived so that the underground water level is at certain level. So we need less of those pumps and other things to extract water for the agriculture. Thank you very much, sir. Thank you. The next speaker is Dr. John Brutus.
Thank you, sir. I'm glad that the House is debating on a very important aspect. And there should be a non-partisan issue. Even it should be beyond the scope of the nation or a state. And we should not be setting the agenda by saying that we have a solution for everything. Actually, the moment we say that, we have wisdom to deal with any crisis the world is facing. We are trying to confuse. As Niranjan said, I appreciate the quote which he said. We have merely borrowed this earth from our children. But some of us believe that we have inherited it and we have the right to do anything with this earth. That is the issue. Tiruchu Shiva, I am very glad that very senior member of this house. He talked about the example he set in the sky, of course. Yes. Yeah, that at 35,000 feet. Now I know that. See, when we go for committee meetings, Shiva also say that he doesn't want flowers. When the bureaucrats come to receive him with flowers, he says, "Don't. I don't want any flower." The sheer wastage. So, if we all can emulate something from somebody, that should be the best way of sending a message. Priyanka, you can also do that. Don't think that you are insulated from that. Okay. Sir, let us be realistic about the current situation. We should not be leaving this issue to the scientists or experts or to the government. Mr. Bhupendra Yadav is a very studious, learned minister. Yes. All of us support that. Though he has some linear politics sometimes, but still. But there is multilinearity. We need to bear with that. Sir, as a nation, we should be very clear that we are paying the price for the greed of human beings. Essentially the greed of the developed nations. And capitalists. There comes the relevance of the ideology, which Mr. Binoy and myself profess. Yes, Manoja also. The capitalist competition. Sir, these developed countries which plundered Asia and Africa, they became industrialized nations at the cost of Asia and Africa. And they still rule the roost at the cost of developing world. Now there is an issue of a double-edged weapon. Sir, it's a very important matter. I've never heard you ringing bell when others were speaking. Your party time is over. No, sir. And then you have another speaker. Sir, I would request you, sir. Please. So, please. Bear with me. I have only started. Sir, there should be climate change here as well. Yeah. Okay, sir. Sir. But one should not deviate. Sir, it's a double-edged weapon. One thing is that we countries, developing countries, start the process for industrialization. Now they want to thrust upon certain standard on us. Fine, perfect. I have no issue about that. At the same time, they are not prepared to shoulder their responsibility. The cumulative guilt they have to compensate. So for so many years, they have been shirking their responsibility. 71 corporations of this world, I would say 100 corporations are responsible for 71% of the emission. That's a fact. So, as a country, I will just come to certain aspects. I'm skipping so many points because I know that you're going to ring the bell again. Your party has another speaker. Yes. If you take He all will the speak, time, sir, don't worry then about nothing will be left for him. Sir, there are my friends there who are ready to give time because this is something a non-partisan issue. Even the minister would try and set apart some time for the members. You need to have the collective inputs.
It's not something which will come by having a unilateral discourse. That you negotiate later. Yes, sir, we are. But sir, now, please. Sir, look, our policies, let us be very clear about our policies. It's absolutely a fact that this doesn't rest on the shoulder of Mr. Bhupendra Yadav. There are many ministries involved. Yes. Unless there are coordinated efforts, Collaborative effort. unless the states are also brought in, unless the civil society is brought in, we cannot find a solution to it. Sir, State of Kerala has decided that we will become net carbon neutral by 250. 250. Yeah, I know Tambidureji also. Edapadi, what is that his name? Please, Mr. Bitters, please. Sir, let us talk about our policies. We have been focusing on EV policy, electrical vehicle policy. Sir, what is the EV? We are using the fossil-made energy only, 70% of the energy. So just because converting our vehicles into EV, that's not going to solve the problem. There are other issues attached to it, sir. And even the FAME India scheme in its phase 2 has only made provisions for increase the demand incentives of two-wheelers. Sir, my request to Mr. Bhupendra Yadavji is that Thank you. You should give some incentive to the states. Those states which are sincerely making efforts to deal with this, so you should incentivize them. You should give them. And second is that there should be a set of awareness that should be created. And I feel that such a debate in the House would send right message to the civil society, to the humanity. Thank you very much, sir. Thank you. The next speaker is Birendra Prasad Bashya. One second. Mr. Bashya, I left one. Mr. Hagre, next speaker is you. You will be the next speaker. Mr. Hagre. Thank you, Chairman, for giving me the time. First of all, I'd like to congratulate Mr. Tiruchi Shiva for selecting this subject. Sir, I also want to congratulate Mr. Shiva for expressing his concern about the 10,000 species that is going to be extinct. He spoke of organic farming. He also said we can't think of a solution having met with an accident. So यहाँ पर बहन जिनका मेडन स्पीच हो रहा था, इन्होंने जड़ी बूटी के बारे में भी जिक्र की. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ. अभी तक आपके मंत्रालय में जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, अच्छा काम करते आया है. और जब तक एनबीए और PPBFRA, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट राइट्स एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी जो है, ये संस्था ये सब चीज़ का ख्याल अभी तक रखते आया है, आगे भी रखेगी. एक बात नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में मैं और एक बात पर भी मैं बधाई देना चाह रहा हूँ. कुछ साल पहले जब हमारे कुछ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और वाइस चांसलर इंक्लूडिंग जो अमेरिका का मॉन्सेंटो के साथ कोई समझौता करने के लिए गए, तो आपका यूनिवर्सिटी, आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी उन पर मुकदमा चलाए. तो इसलिए जो चीज़ आपका हाथ में है वो चीज़ आप कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अभी इस डिस्कशन के लिए जो यहाँ पर लाइब्रेरी में जो हमको जो मटेरियल जो मिला है, जो इसमें जो ये जो हाउ कैन इंडिया कोप विद द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स, इसके बारे में जो ये कह रहे हैं कि एन एडाप्टेशन अप्रोच इज द वे टू गो. फॉर दिस a big push must be given to the interlinking of rivers and the use of GM crops. अभी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में संजय सिंह जी अभी बोले हैं. ये क्लाइमेट चेंज जो है ये रोकने के लिए रेजिलियंस चाहिए सर. रेजिलियंस विविधता को बढ़ाता है. जीएम क्रॉप्स सहने का शक्ति को घटाता है.
GMHT क्रॉप्स विविधता को कम करता है और मोनोकल्चर को बढ़ाता है। और ये GM क्रॉप्स एक्चुअली ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए इसका क्लाइमेट चेंज पर इसका जो बुरी असर को देखते हुए मेरे पार्टी का नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके विरोध में पहले का यूपीए के सरकार के समय में भी चिट्ठी लिखा और इस सरकार में भी चिट्ठी लिखे हैं। और दूसरा बात, ये जो दुनिया में जहां-जहां ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है ये ज़्यादा यील्ड दिए हैं, वो उन देशों में कहाँ भी GM मस्टर्ड नहीं है। और GM सीड्स का कंपनी सरकार को यील्ड के बारे में और कीटनाशक फसल को छिड़काने का जरूरी नहीं, इस बात पर कई सरकार को गुमराह किया है। और if I had an inkling of the future at that time, BT cotton would not have been introduced in India. ये बात मेरे बात नहीं है, तत्कालीन कॉटन टेक्सटाइल सेक्रेटरी और उसके बाद उन्होंने देश के सबसे बड़ा पद पे आकर के रिटायर हुए, उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा है। और सर ये चीज़ को हर्बिसाइड छिड़काना पड़ता है और इसके वजह से अमेरिका में सबसे ज़्यादा मुकदमा हर्बिसाइड ड्रिफ्ट डैमेजेस नाम से ये हो रहा है। और जो पड़ोसी किसान अपना पड़ोस के किसान के ऊपर ये किया है और इस कारण से हम लोगों को ये सब चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और अंत में मैं मेरे बात एक करके समाप्त कर रहा हूँ कि सरकार GM क्रॉप्स पर कोई कदम उठाने से पहले, जैसे 2009 और 10 में तत्कालीन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने देश के 7 जगह पे पब्लिक हियरिंग रखे हैं, इस सरकार को भी मैं निवेदन करता हूं आप भी पब्लिक हियरिंग रखें। और GM क्रॉप्स में ये बताता हूं, GM क्रॉप्स ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। श्री वीरेंद्र प्रसाद बच्चा। Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak on the short duration discussion. Sir, today world is facing most serious problem due to the climate change and then global warming, sir. It is a war not like between Russia and Ukraine. Russia-Ukraine war is related to the two nations, but this war is against the entire world, sir. And India always played very constructive and positive role in the global warming and climate change, sir. When most leading country of the world, developed country of the world, work against the spirit of the other nation. At that time, India played very significant role against the climate change and global warming. For example, in Copenhagen Summit, 24th Climate Change Organization by the United Nations, Indian role was very positive. Sir, United Nations organized 26 Climate Change Convention at the Glasgow, Scotland, sir. And in Glasgow Convention, India has played very important role, sir. The Indian declaration on the Glasgow Summit is very clear, sir. Zero carbon, clear energy, and efficient use of energy, sir. This is the propaganda of India in the Glasgow Summit, sir. Sir, in the Glasgow Summit, in the Paris Summit, agreement and long-term, India declared low carbon development strategies towards the zero emission by 2070, accordance with the principle of the equity common but difference between the responsibility. So, in the Glasgow Convention also, India declared by 2070, India will be the zero carbon
affected countries, sir. This is a wonderful step initiative took by the government of India, sir. In the Glasgow summit itself, India has declared ambitious plan. By 2070, India is going to produce 300 gigawatt energy from the renewable energy, sir. This is very welcome move, sir. 2070, by 2070, India is going to produce, sir, near about 300 megawatts, sir, from the renewable energy, sir. So, government of India has given lots of emphasis in the renewable energy. Sir, along with this, sir, I like to request Honorable Minister through him to the Petroleum Ministry. Try to give him more importance to the ethanol. Sir, energy produced from the ethanol is the call of the hour, sir, and energy from the bamboo also an important call, sir. It already, sir, Numaligarh refinery of Assam started produce energy from the bamboo, sir. I like to request Honorable Minister, in his absence, other minister, through his Honorable Minister is there, through him, they should discuss, they raise the issue and discuss to allocate more budgetary support for the renewable energy plus for the ethanol production for bamboo from the energy, sir. Sir, one of the most important part of this bill is the climate change, then global warming. This is not only affected one state, sir. This is affected entire world, sir, including my state, sir. So my state mission, government should go for the more plantation, sir. More plantation, government should encourage more, and government should allow member of parliament to use their imperial development for the plantation, sir. This should be encouraged, sir. Sir, due to the global trend, we are facing lots, sir. Assam will be faced lots, sir, because Assam already have a huge problem due to the floods, sir. And now, plus in addition, China is constructing a big dam in the China, sir. If due to this, it will be worst effect country like Assam, state like Assam. So I have to like to draw the attention, look after this issue, the China also. Sir, my last point is that, which is very important, sir. Every year, flood creating havoc, sir. And due to flood and erosion, many forest land of our country was destroyed, sir, including it would affect us, sir, Manas Abharanyanya in Assam and Kaziranga National Park in Assam, sir. To protect Kaziranga National Park, to protect Dibru Soikoa, to protect Manas Abharanyanya, government should provide more farm to protect the forest, and it will be helpful to green energy, and which will be definitely helpful to fight against the global warming, sir, because climate change, due to the climate change, global warming is coming. So I hope government will do consider my proposal. With this, sir, thank you very much given the opportunity. Thank you, and Sri Ramji. Thanks Mr. Siba for his initiative. धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर विषय पर बोलने का अवसर प्रदान दिया है। मान्यवर, आज सदन इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर गंभीर है। सत्ता पक्ष के और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं, क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज से होने वाले दुष्प्रभावों से हम सभी प्रभावित हैं, और अगर इसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए और भी भयावह होगा। हमारी पृथ्वी का तापमान 0.8 से बढ़कर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसकी वजह से बिन मौसम बरसात, सूखा, अधिक गर्मी पड़ना, मौसम के बदलाव के साथ ही हमारे फसल चक्र में भी प्रभाव देखने को मिला, और इसकी वजह से तमाम फसलें भी बर्बाद हुई, और इस मौसम में बदलाव की वजह से तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी आईं, जिसको माननीय संजय सिंह जी ने भी कोट किया है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। वहीं आज हमारे इसी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से विश्व के अंदर तमाम जानें भी जाती हैं। इसलिए माननीय
हमें इसके कारण और निवारण पर ध्यान देना होगा। मानवीय कारण में तो कई सारे हैं और इसमें फॉसिल फ्यूल को लेकर के बड़ी लंबी बातें हुई हैं और अभी इससे पहले माननीय मंत्री जी ने कुछ दिन पहले एक बिल भी यहाँ पे आया था एनर्जी कंजर्वेशन बिल को लेकर के, उसमें भी सारी बातें की गई हैं और सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है कि एनर्जी कंजर्वेशन में रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान दिया जाएगा। और माननीय इसके साथ ही और भी मेजर कारण हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा कि डिफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना होगा और चेंज लाइफ स्टाइल को लेकर भी हमें ध्यान देना होगा कि आज हम अपने चेंज लाइफ स्टाइल को लेकर के हम अपने फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, मिनरल्स को निकालने के लिए, कोल्स को निकालने के लिए फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, हाईवेज को बनाने के लिए हम फॉरेस्ट काट रहे हैं। इन बातों को ध्यान देना होगा और साथ ही हमें जानना भी होगा कि पृथ्वी में 27% ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है और 70% ऑक्सीजन हमें मिनरल्स प्लांट से मिलती है और इस 27% को बचाने के हमारे पास उपाय हैं कि जो भी हम प्लांट को काटते हैं, उन प्लांटों को काटने के बाद हाईवेज बनाते हैं तो वहां पे उनको रीप्लांटेशन किया जाए, क्योंकि एक पेड़ डेली हमें 118 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है और एक पेड़ अपने जीवन भर में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो इसके मतलब उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में ज्यादा है। हमें पेड़ों को बचाने को लेकर के भी आगे बढ़ना चाहिए। अगले 10-20 सालों पहले पीछे जाए अगर हम, तो हमारे पास देश में करीब 25% फॉरेस्ट था। आज इसकी जो रकबा है घट करके 21.71% रह गया। हमें इस पे भी चिंता करनी चाहिए कि हमें अपने फॉरेस्ट को कैसे बढ़ाना है, उसको लेकर के हमें गंभीर रहना पड़ेगा और माननीय कुछ उद्योगों को लेकर भी हमें गंभीर रहना पड़ेगा जो रात दिन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, मीथेन निकाल रहे हैं और हमारे सामने निकाल रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। जैसे में एक छोटा सा उद्योग है, पूरे देश में प्रचलित है, मुगल कालीन से वो चला आ रहा है एक बिजनेस ईंट बनाने का। ईंट जो है पुराने स्तर से कोयले से या लकड़ी को जला करके ईंट बनाई जाती है। देश के अंदर 14 लाख ईंटों के भट्टे हैं और इन ईंटों के भट्टों से रात दिन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, मीथेन निकल रही है। इसको लेकर भी सदन चर्चा करे कि इन पर भी R&D और साइंटिफिक टीम लगा करके ईंट भट्टों को कैसे कोयले से मुक्त किया जाए, उनको लेकर कौन सी एनर्जी वहां पे दी जाए, कैसे उनका ईंधन दिया जाए, उसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। और इन्हीं सब बातों को लेकर के हमें रिसाइकलिंग को लेकर के ध्यान देना चाहिए कि रिसाइकलिंग प्रोडक्ट के हमें यूज करने हैं। अवेयरनेस कैंपेनिंग को लेकर भी हमें सजग रहना चाहिए कि हमें अगर अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं होगी कि हमें पेड़ से क्या मिलता है, पेड़ से क्या बेनिफिट है और तमाम जो चीजें हैं कि बल्ब लगाने से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, LED निकालने से कितना उसमें बचत होगी, ये सारी कैंपेनिंग करने की जरूरत है। लोगों में जब अवेयरनेस आएगी तो 100% लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता करेंगे। यही मैं आपके माध्यम से आप मंत्री जी से कहना चाहता हूं। धन्यवाद। The next speaker is Vandana Chavan. Sir, let me thank the chair and also, of course, the honorable member Tiruchi Shivaji for having taken up this topic for discussion. I think climate change is such a topic which challenges the very existence of humankind. So earlier when we talked about climate change, say around the 2000s, whenever we spoke about climate change, we thought something is happening at the North and South Pole. The polar bears, the penguins there are getting displaced. We really didn't ever feel that it's going to reach our country, it's going to reach our cities and our doorstep. So today, each one of us realizes it's not only our country, our state, our homes, our cities that are seeing the impacts of climate change, sir. So we know when the North and South Pole glaciers were melting, actually it was a red alert for all of us. We didn't realize that when the glaciers melt, the water comes into the seas and the sea level rises. Sir, India is a peninsula. We have several little islands around the country. So when we see back in history, we didn't even realize that people who are fishermen, vulnerable community, were moving inside into the mainland. In fact, if we saw Animal Planet Discovery Channel or National Geographic, we saw several people, fishermen, who said, there it was where our city or our village was, and now it's under the sea. So we did not realize that in 2008, we lost an island called Lochara. There were about 6,000 people staying on that island. I don't know whether we really bothered as to what happened to this inhabitants. So secondly, there was an island called Moor Island. At every bilateral talks of Bangladesh and India,
there were issues on ownership. Who owns it, India or Bangladesh? But it was ultimately nature who took the decision, and Moor Island is not there anymore. So today we see that the IPCC also says in a very, very recent report based on NASA statistics that 12 cities of India along the coastline are going to be submerged in water by the end of this century. This is serious, sir. So we all see that storms have increased. On the eastern coast, there used to be several storms hitting Orissa, Andhra Pradesh. But on the western coast, sir, we had never heard of storms. In the recent past, sir, 4 or 5 years, we see strong storms hitting the western coast also. So also torrential rains and cloudbursts. Never heard of it before. Sir, the agricultural crop a standing crop gets devastated. Not just this, we have seen the cities have been flooded. So many cities have been flooded. I don't want to list them, but all of us have borne the brunt, sir. Heat waves, 49 degrees centigrade temperature in Delhi. I never heard of, sir. And therefore, all these things, disease, dengue, chikungunya on the rise, displacement of people. Even if you think of it, sir, talking of our country, look to the right on the eastern side, China. Sir, don't look at the watch constantly, sir. I get very pressurized. So the China... Your time will be about to be over, that's why. Over? Sir, you can't do this. You have 3 minutes. No, don't waste your time. You have 3 minutes. Yes, sir. So please don't look at it. Free now. Stop Okay. myself. On the right-hand side, sir, China, we know the Yangtze River was completely dry. On the left-hand side, Pakistan, 2/3 of Pakistan was underwater, sir. Look at Europe. Even today, due to the heat wave, 16,000 people have died in Europe. Now, this pattern can change anyhow, and we could also bear the brunt. In fact, we are bearing the brunt, maybe not to such extent. Extinction of species, sir, a lot of people have said. I just want to give one example. In my college days, sir, I had taken zoology as one of my topics. We had to dissect cockroach and dissect a frog. So whenever our cut went wrong, we would go to our professor and say, sir, the cut has gone wrong. Can you give me another frog? And he would happily give it. So this frog is extinct now. And there are so many other such species which are extinct. Sir, at the global level, we have the UNFCCC. It was formed in the year 1992 when the Rio conference happened. It was mooted. Then at regular intervals, we have the COP meetings. I'm very happy that after the Paris Agreement, every year there is a meeting, and every country has to give updates. So in India also, we had in 2008 the NAPCC, which was mooted by Dr. Manmohan Singh ji as the Prime Minister. Now, of course, we have given very ambitious commitments there. And in fact, we have, as far as renewable energy is concerned, we have excelled our commitments. I would have liked to congratulate the government, but you are looking there, sir, so I'm going to stop. Sir, so my only question is, sir, at the global level, we are doing a wonderful job. At the national level, we are doing a wonderful job. But the main thing which Rio conference talked about, Agenda 21, think globally, but act locally. Sir, if we have to really make a difference and address climate change, the action has to be at local level. Unfortunately, none of the local self-governments are equipped enough, sensitized enough that there lies the solution. Every project, sir, of development must be seen from the lens of sustainability. Few months back, sir, the city which I come from, Pune, sir, give me 5 minutes, sir. 2 minutes. Pune Municipal. Sir, this is important, sir. I wish I could have given you sir, some more time, important but your time is over. But Sir, then there are other parliamentarians speakers. need to do this. I have to. Sir, I had a talk with the engineers of the municipal corporation, sir, topmost ones, but unfortunately none of them were sensitized on what is climate change and how they need to. So my appeal, as Britash ji said, that it's not the work of just one ministry, it is the work of several. And my last point, sir, I think we also owe a responsibility. I'm the team of former Vice President Al Gore of America. It is called the Climate Reality. And during his sessions, we have been mandated that every day we talk to at least 10 people on climate change and sensitize them in some way or the other over tea or coffee. I think all of us as parliamentarians need to do that. Yeah. And secondly, sir, you're constantly looking at the time, so I'm getting very disturbed.
Time is up. last, You had 3 point, minutes, you spoke last 6 point, minutes. Sir, last I point. wish I could Sir, have I given make more an time appeal. because I I love make an listening to appeal. you. Please, Sir, please sir, conclude this now. is very important. What we should do. I would like to make an appeal, sir, to appeal to all the parliament, all my colleagues here, that we must all see the film of Greta Thunberg. This girl in 2018 was 15-year-old. She sat outside on every Friday of the Swedish parliament and she made her parliamentarians think about how we need to address climate change. She was not put in the jail, sir, for doing this, but she was called by the United Nations to address all the leaders of the country. And she says, she makes an appeal to all of us who are in decision-making positions that why are you snatching my future? Please, please, do see these films on YouTube. I'm sure it will inspire each one of us that we owe a responsibility to the future generation because we have leased out the future from them. Thank you, sir. Sri Ram Gopal Yadav, Professor Ram Gopal Yadav. धन्यवाद श्रीमान। मैं 2-3 मिनट में 2-3 बात ही कहूँगा। नंबर 1 तो ये कि कुदरत ने एक बिल्कुल संतुलन बना के रखा था कि कितना पृथ्वी को गर्म रहना है और किस तरह से लोगों को सर्वाइव करना है, लेकिन मानव जाति ने उस संतुलन को बिगाड़ने का काम किया। उसी का परिणाम है ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। हमेशा से ही समुद्र का जो पानी है उसका जो बाष्पीकरण होता है उससे पृथ्वी गर्म रहती और जितना आवश्यक है उतनी गर्म रहती थी। ग्रीन हाउसेस गैसेस के एमिशन से, अत्यधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन से और हमारे यहाँ खास तौर से जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, जो जंगलों का काटा जाना हुआ है, इस सब से और बड़े पैमाने पर डीजल पेट्रोल के जलाने से हर घर में आज से 20 साल पहले जिला हेडक्वार्टर पर भी मैंने अपने इटावा में किसी के यहाँ रेफ्रिजरेटर ये एसी नहीं देखा। कहीं एक आध गाड़ी हुआ करती थी, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और ग्वालियर किसी पेशेंट को ले जाना पड़े तो एक ठाकुर साहब थे, उनकी गाड़ी मांग के ले जाया करते थे। आज 20,000 गाड़ियां हैं। तो ये जो है ये क्या कर रहे हैं, सब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं। हालांकि ग्रीन हाउसेस गैसेस भी जरूरी हैं, वो कुछ गर्मी को, हीट को टेप करके रोके रखने के लिए और ज्यादा है उसको वातावरण से बाहर जाने देने के लिए, क्योंकि अगर सबको रोक दिया जाएगा तब तो बहुत गर्म हो जाए, कोई जिंदा नहीं रह सकता है, और सब हीट बाहर चली जाएगी तो पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी, तब भी कोई नहीं जिंदा रह सकता है। तो वो जो संतुलन कुदरत ने रखा था वो हम लोगों ने, खुद व्यक्तियों ने, सारी दुनिया ने, डेवलप्ड कंट्री ने सबसे ज्यादा इसका नुकसान किया। हिंदुस्तान पे आरोप लगाया कि धान की फसल कम करो, इसमें मीथेन बहुत एमिशन होता है जो वातावरण को खराब कर रही है। आप जानते हैं, अमेरिका कहता था हिंदुस्तान जब धान की फसल बंद करो, इनकी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा निकल रही है, एमिशन हो रहा है, दुनिया को नुकसान हो रहा है। लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। जितनी कमिटीज की मीटिंग हो रही, हाई समिट्स की मीटिंग हो रही, ये कुछ नहीं कर सकती। किसी भी संप्रभु कंट्री पर ये कोई प्रतिबंध ज्यादा लागू हो नहीं सकता है। तमाम ट्रीटीज हुई, डिसआर्मामेंट को लेके नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई, उसके बाद बम विस्फोट एक्सप्लोजन हुआ एटम बम का, सीटीबीटी इसके बाद हुआ और हम लोगों ने भी किया। हैं ये संधियां कि नहीं हैं, बट दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन सोवरेन कंट्रीज। तो इनसे हो नहीं सकता। हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, हम कैसे इससे बचें, क्योंकि इसके एडवर्स असर इतने ज्यादा हैं। ग्लेशियर्स पिघलने लगे, गर्मियों में नदियों में पानी नहीं आएगा, सिंचाई के लिए नहरें उनसे निकलती हैं उनमें पानी नहीं होगा, फसलें नहीं हो पाएंगी सही। लोग कहते हैं कि 20 साल बाद दिल्ली में जमुना सूख जाएगी या सिर्फ ये दिल्ली का जो पानी आता है घरों का, उसका नाला बन के रह जाएगी। ये स्थिति है। नए किस्म के तमाम रोग जिनका नाम पहले किसी ने नहीं सुना था, इसकी वजह से, इन्हीं सब की वजह से हो रहा है।
नई नई बीमारी, पुरानी बीमारियां थी, सबका इलाज था, सबकी दवाइयां थी, सबकी खोज कर ली गई थी। अब नया आता है, कोरोना आया तो पता चला वैक्सीन को डेवलप करने में इतना टाइम लगा, तब तक बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन वी डिड इट वेरी एफिशिएंटली। हमारे तो प्रश्न ये है, ये जो सारी दिक्कतें पैदा होने वाली हैं उनको रोकना तो हमें ही होगा। माननीय मंत्री जी, एक तो आप ये कीजिए कि जो जंगल कट रहे हैं उन पर सख्ती से रोक लगाने की कोशिश कीजिए, सख्ती से, क्योंकि बहुत इतने बड़े माफिया हो गए हैं जंगल लकड़ी काटने वाले कि आज से 20 साल पहले उत्तराखंड में जहाँ गए, जहाँ इतने बड़े पैमाने पर टीक और इसके जंगल खड़े रहते थे, अब वो सब बेगड़े हो गए, सब कट गए धीरे धीरे। एक बार मैं गया गुजरात में, आपको मालूम है एक बार ऐसे ही हुआ था, चर्चेज वगैरह में आग लगाई गई, तो हम जनेश्वर मिश्र जी के नेतृत्व में गए। तो एक डांग जिला है, डांग, उसमें गए तो मैं सो गया था गाड़ी में, जगह तो लगा उत्तराखंड में आ गए। ठंडी हवा चले और बढ़िया टीक के और साल के साखू के पेड़ खड़े हुए, जंगल बिल्कुल उसी तरह का। वहाँ के कप्तान ने कहा कि यहाँ सबसे अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है, मैंने तो आज ही आया हूँ, बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन ये सब वहाँ भी बता रहे हैं कि सब बड़े पैमाने पर कट रहे हैं, एक एक पेड़ की कीमत 5-5, 6-6, 10-10 लाख तक होती, लोग काट रहे हैं। हर जगह नए लग नहीं रहे, लगने क्या तरीका, मैं एक आध मिनट ज्यादा ले लूंगा, घंटी मत बजाना, घंटी बजाओ वैसे बैठ जाऊं। आपको ऑलरेडी एक बार दे दिया, मैं आपको बता रहा हूं, घंटी नहीं बजाएंगे, आप समाप्त कीजिए। सिस्टम ये है, अब मिनिस्टर इतने अच्छे हैं, उधर देखना पड़ेगा। सिस्टम ये है कि मैं एक बार फॉरेस्ट एनवायरमेंट इसमें कमेटी में था, जोशी जी अध्यक्ष थे, मुरली मनोज जोशी। तो ये जो टेहरी डैम हुआ था, बना था जब, तो पेड़ बहुत डूबे, तो ये कहा गया कि नहीं, इतने पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे दूसरी जगह आसपास। तो मैं एक बार झांसी की तरफ गया तो बोले कि ये प्लांटेशन जो है टेहरी की जगह यहाँ हो रहा है। मैंने उस कमेटी में पूछा कि जोशी जी मुझे ये पता चला है, तो जोशी ने सेक्रेटरी से पूछा, फॉरेस्ट जो वन विभाग के थे इस मंत्रालय, कि क्या ये सही है, तो उन्होंने कहा सही। तो बोले टेहरी के बदले पेड़ झांसी में लगाओ तो यहाँ के एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ने वाला, और वो भी कैसे लगते हैं। देखिए यहाँ किसी पे दोषारोपण मैं नहीं करना चाहता हूँ, एवरीबडी, अगर कोई कहे कि साहब इसमें तो कुछ लोग दोषी हैं, तो सांस लेते हैं हम तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, हर आदमी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, लेकिन इसके बिना जिंदा भी तो नहीं रह सकता है। हम कहीं सांस मत लीजिए साहब, कार्बन डाइऑक्साइड हर आदमी एमिशन कर रहा है, तो कोई फिर सरवाइव कैसे करेगा। तो वो तो एसेंशियल है, लेकिन पेड़ के नाम पर बबूल के दाने, हमारे चंबल के बीहड़ के ऊपर एक एयर कुछ गन होती है जिससे वो फायर करते हैं जंगल में, बीहड़ों में, रेविन्स में, और वो बीज जो है उसका जमीन में घुस जाता है, फिर वो उग जाता है। वो सब बबूल के पेड़ होते हैं जो कोई काम के नहीं होते हैं, न ज़्यादा उन्हें पत्ते होते हैं, जो ज़्यादा बड़े होते हैं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी मिले, तो नहीं होता है। लेकिन वो कहते हैं कि 5 रुपए का पेड़ था, हमने जोशी जी से कहा कि 5 रुपए में 1000 बबूल के बीज आते, और इन्होंने 5000 पेड़ लगा दिए और 25,000 रुपया गवर्नमेंट से ले लिया। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लांटेशन कीजिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकिएगा किसी तरीके से, और ये संभव तो नहीं है, वरना अब हर आदमी की जिम्मेदारी तो बनती है, घर से 100 मीटर दूर भी जाएगा तो बिना गाड़ी में बैठे नहीं जा सकता। ये स्थिति हो गई, एक एक घर में 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। किसी न किसी दिन किसी न किसी गवर्नमेंट को ये पाबंदी लगानी पड़ेगी कि इससे ज्यादा पेट्रोल एक दिन के लिए नहीं मिल सकती। आप धन्यवाद। अगर ये 100 गाड़ियां रखिए अपने पास, यू विल हैव टू डू मेक राशनिंग फॉर इट, क्योंकि सारा तो हमारी इकोनॉमी खत्म हो ही जा रही है इस पेट्रोल और डीजल की वजह से। इंपोर्ट करते करते इतने बड़े पैमाने पे पैसा विदेशों में जा रहा है, और अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है, लग्जरी में खर्च हो रहा है। ये सारे कोशिशें करनी पड़ेंगी, प्रयास करना पड़ेगा, और किसी न किसी को ये
जानते हुए भी कि चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन देश हित में इस तरह के कदम उठाने ही पड़ेंगे अगर हमें सरवाइव करना है तो, वरना बहुत खराब स्थिति आने वाली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती रंजित रंजन जी, आपके लिए सिर्फ 2 ही मिनट बचा है, पार्टी के 2 मिनट बचा है, ठीक है। आप 1-2 मिनट ज्यादा बोल लीजिए। फिर नहीं बोलते, आपके और स्पीकर है, इसलिए सीमा के अंदर रखिए। ये ऐसे नहीं होता है। मैं ही हूँ। सबको बोलने दे रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे। सभापति जी, मेरा भाषण ही रोक दिया। मुझे एक उक्ति याद आ रही है, गाना याद आ रहा है, जरा रुक जा रे बंदे, जरा थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी। मुझे आज ग्लोबल वार्मिंग का डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि आप एंड तक बैठे हुए हैं। मुझे कोरोना याद आ गया। कोरोना में हम सब, जब पहली कोरोना की लहर थी, हम सब घर पे बैठे हुए थे, तो अचानक से बहुत लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। मैंने भी लिखना शुरू किया। उसी वक्त जो ऐसा महसूस हुआ वो आपको बताना चाहूंगी। देखिए, डेटा की बात तो मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है। आपका पेरिस एग्रीमेंट 2050 से 2070, आपका पंच अमृत का मिशन, सारा कुछ इसमें है लिखा हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कोई राजनीतिकरण का मुद्दा नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है और पूरे विश्व इसमें इन्वॉल्व है। मरेंगे तो हम सब मरेंगे, और मुझे लगता है कि हम लोग नहीं, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए जो हम छोड़ के जा रहे हैं, वो हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। कोरोना में हम लोगों ने देखा, विद इन 10 दिन में जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी कैपिटल दिल्ली कहा जाता है, कोई कह रहा है पलारी का धुआं है, कोई कह रहा है अनऑथराइज्ड फैक्ट्री का धुआं है, चारों तरफ दिल्ली के पहाड़ है। प्रकृति ने क्या किया? हम सब चुपचाप घर बैठे और 350 से IQ सीधा 49 आ गया। हम और आप सब दूर दूर से देख रहे थे, चंडीगढ़ से पहाड़ दिख रहे थे, यहां से दूर दूर से अगर आप देख रहे थे तो कई किलोमीटर तक आपको सीन नजर आ रहे थे। क्यों? प्रकृति ने तो हम लोग को बहुत अच्छा और सीधा सिंपल मैसेज दिया कि अगर हम चुपचाप घर में बैठ जाए तो प्रकृति को अपने आप को ठीक करना आता है, वो सक्षम है। दोषी कौन है? हम सब दोषी है। हमारी फैक्ट्रीज दोषी है, हमारी गाड़ियां दोषी है, हमारा लोभ दोषी है, हमारा अत्याधुनिक होना दोषी है, कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ा करना दोषी है, पेड़ को काटना दोषी है। देखिए, वैसे मैंने बिटिया से पूछा, मैंने कहा बेटा ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या करना चाहिए, समाधान क्या है? कहती मामा पेड़ मत काटो, गाड़ी में कम चढ़ो, गाड़ी कम यूज करो, इको फ्रेंडली मकान बनाओ, पानी कम यूज करो, सिंपल लाइफ जियो। हमारे बच्चे सिंपल तरीके से सिंपल बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है बहुत टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। क्या हम वो बातें कर रहे हैं? अभी बात कर रहे थे कि पॉलिथीन बंद हो गए। अरे नहीं बंद हुए, मैं आपकी जानकारी में दे रही हूँ। सब्जी वाले, ठेले वाले और जो छोटे छोटे दुकान वाले कहते हैं कि मैडम पहले सरकार को बोलिए, उसके बदले में कोई ऑथेंटिक लेकर आए तब पॉलिथीन बंद होगा। मार्केट में पॉलिथीन बंद नहीं है, ये एलिगेशन मैं आप पे नहीं लगा रही। 2020 से 21 में 31 लाख पेड़ कट गए। आप ही ने क्वेश्चन आवर में आंसर दिया। क्या उसके बदले में पेड़ लगे? क्या एक पेड़ को लगाने में, पौधे से पेड़ बनने में कितने साल लग जाते हैं? अगर देवदार को शुरू करें तो 50 साल, 100 साल। आम के पेड़ को शुरू करें तो बड़े होते हैं, फल देने में भी 4 साल उसको भी लग जाते हैं। अभी हमारे भाई साहब, मैं अभी नहीं बोलती हूँ, मैंने स्टार्ट ही किया। रामगोपाल जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि आज मैंने बहुत बारीकी से देखा है। सर, मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है। उत्तराखंड की बात हो, हिमाचल की बात हो, अरुणाचल की बात हो, जाके दिल रोता है वहां पर। हम लोग ने डेवलपमेंट के नाम पर किसी की भी सरकार हो, फला जगह पे हमारा मंत्री गया, CM गया, ये सड़क बना दो, बना दी।
ये सड़क बना दो, बना दी। हम एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कभी भी डेवलपमेंट का कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, यह सच्चाई है। आप कहेंगे कि पहाड़ी इलाकों में कानून बने हैं, कोई भी बाहरी आदमी आके वहां पर जमीन नहीं ले सकता। आपको भी पता, हम सबको पता है कि इंडिया में, हमारे भारत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आज हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल हो, भरे पड़े हैं लोग। सर अगर आप पूछेगा, मैं आपको एक पहाड़ का नाम दूंगी, दिल्ली वालों ने पूरा पूरा पहाड़ खरीद लिया है और धीरे धीरे वो पहाड़